So let us begin. We have, I think, Dr. Preeti and Dr. Sunu who have volunteered to become mediators, right? And we have, I think, Roshali and Dr. Subodh who have volunteered to be the parties. I think you all must have received your facts. All of you have received your facts? Right. Dr. Ketki, Dr. Deepa, you all want to contribute or you all want to be watching? Whatever. I thought one of them I would don't become the gynecologist or dermatologist. both of us are. In fact, both of us are. Yes, yes. Dr. And- Deepa can be a very good aggrieved party. Oh no, that Yeah. I see every day. It will be a good mediator, a good training for a mediator. Yes, I think you all can bring in your experience in terms of how parties behave and how a doctor thinks. So that is that would be very interesting. Then I request Dr. Ketki to support Dr. Subodh, and Nalini will send across the private facts of the doctor to you. And Dr. Deepa to support Roshali, and again Nalini will send you Fatima's private facts. So, and you all know where it's coming from. If you feel that this is an angle that you all, that should be covered, please contribute, because that will make it, that will give a real life experience for the mediator in terms of how to handle. We are not focusing too much on the mediator introductions today because that's been covered before, but do it so that we set a tone. And after that, but we are focusing on the communication negotiation, not really looking for a settlement. If it comes across, fine, but don't run after it. Let's focus on the tools that we've learned. Right? So have you sent anything separate for the mediator also, or just that case history? One sheet of paper, yeah, just one sheet of paper. That's for the mediator. The parties would have received 2 sheets with private facts for them. See, as a mediator, that's all you'll know. Okay. In the beginning. Okay. So we are going to switch our cameras off, and we will be stopping you in between to, for some comments or something that we may want to say. So JP and I will be doing that. Otherwise, our cameras will be off. Sunu, you want to start or you want me to start? Whatever, you can start. A very good afternoon and namaste. आपको यहाँ देखकर बहुत आप सबको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा. We have Fatima Begum, so I'm not sure whether she's going to understand English. So we're going to get a mix of both. I don't know if that is okay, but I think it should work. Okay, I'm Dr. Preeti Jaikar, and me and my colleague, Dr. Sunu Balsara, will be your mediators for today. You can call me Dr. Jaikar, and Dr. Sunu will let you know what she wants to be addressed as. Dr. Shikha, can I call you Dr. Shikha, or you want me to address you as something different? Okay, thank you, Dr. Shikha. Dr. Shikha. Yeah, Dr. Shikha. Okay, thank you. एंड फातिमा जी, आपको कैसे मैं आपका नाम मैं फातिमा जी करके बुलाऊं कि आपका कोई दूसरे नाम से आपको एड्रेस करूं? फातिमा बुलाइए. फातिमा. ओके ओके फातिमा जी. मैं प्रैक्टिसिंग सर्जन हूं एंड मुंबई में 23 साल से काम कर रही हूं. मैं हिंदी, मराठी, इंग्लिश बोल सकती हूँ, तो बीच बीच में हिंदी और इंग्लिश दोनों का मैं ये करके आपको भी सब समझा दूंगी. ये पहले से जानना जरूरी है कि there is no conflict of interest from my side, either in relation to what the matter is about or in relation to either of the parties. And इसके before we proceed any further, मैं आप दोनों को बहुत बधाई दे रही हूँ कि आप इस डिसीजन पे आए हैं कि आपको मीडिएशन से आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना है. आपके साथ में आपके लॉयर्स भी आए हैं. मिस्टर यादव जो शिखर जी के साथ आए हैं, और फातिमा जी आपके लॉयर हैं. मिस्टर झा, उनको भी मुझे थैंक यू बोलना है, क्योंकि उनकी वजह से आपको इस
सोल्यूशन का या इस प्रोसेस का आपको अंदाजा आया है कि आपको इससे बेनिफिट होगा, तो उनके लिए भी एक बड़ी थैंक यू मेरी तरफ से। मुझे शुरुआत से आपको थोड़े पॉइंट्स स्ट्रेस करके और बताने जरूरी है कि ये जो सेशन है वो पूरा आप खुद से आए हैं, यानी इसको वॉलेंट्री बोलते हैं। और इस सेशन में पूरा कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी आप जो भी मुझे बता रहे हैं या जो भी इस मीटिंग्स के दौरान जो बताए जाएंगे या आपस में आप बात करेंगे, उसके कहीं भी जिक्र या कहीं भी नोट होने वाला नहीं है। और जो मैं मेरी तरफ से थोड़े नोट्स बना रही हूँ वो एंड में पूरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और आप जो भी मुझे बताएंगे वो जो है कोर्ट में कभी लिया नहीं जाए। उसके there are a few caveats to it where I have to tell you that if there are a couple of points which are to be brought to the notice of the law, that will be done. Otherwise, it is purely confidential. इसमें मेरा क्या रोल रहेगा? I am here as a facilitator. मैं आपके I am not here to pass any judgment. I don't have any opinion. I only want to make sure that you all are able to talk to each other. एंड एम इस पूरे प्रोसेस का यही है कि आप सोल्यूशन लेके अग्रीमेंट एंड में साइन करें जो आप दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। एंड जो भी पॉइंट्स आप इस सेशन के दौरान बता रहे हैं वो आप एक दूसरे को बेझिझक बताएं और सोल्यूशन जो निकलता है वो फेवरेबल हो, इसी आशा से हम लोग आगे जाने वाले हैं। ये इस दौरान जब मुझे पता करना है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, आई मे रिक्वेस्ट और यू कैन रिक्वेस्ट अ प्राइवेट सेशन जिसमें आप मेरे साथ प्राइवेटली आपकी जो बातें हैं वो बता सकते हैं। वो दूसरे पार्टी से शेयर नहीं होगा जब तक आप तैयार ना हो। एंड ये सेशन जो है आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे ज्यादा क्लियर पता चल जाएंगे, तो उससे जो है मुझे प्रॉब्लम का अंदाज और डीपली आ जाएगा। सो दिस इज द वे दैट वी आर गोइंग टू होल्ड प्राइवेट सेशंस इन बिटवीन। और जो मैं आपके साथ प्राइवेट सेशन करूंगी, आई विल बी डूइंग इट विद द अदर पार्टी आल्सो, एंड देयर इज नो बायस, देयर इज नो प्रेजुडिस, सो देयर इज नो टेकिंग साइड्स इन द होल थिंग। हम लोग एक पार्टी से चालू करेंगे। रूल्स थोड़े हैं इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो आप प्लीज ध्यान से सुनिए। These are the rules that are going to go on throughout the process. We have decided that we are going to finish the entire process of mediation in 30 days. We are hoping to finish it in 30 days with as many sessions that are required. The fees have also been outlined. Lekin once the party is talking, the other party has to listen. तो अगर ये पार्टी बात कर रही है तो आपको बीच में इंटरप्ट नहीं करना है। हमारे कोई भी सेशन में अब्यूजिव वर्ड्स या आई डोंट नो द एग्जैक्ट हिंदी इक्विवेलेंट, गंदी गालीज, गलत शब्द। गालक शब्द वो इस्तेमाल करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। और नो फिजिकल अब्यूज, नो वर्बल अब्यूज इज गोइंग टू बी टॉलरेटेड। आपको जो भी बोलना है वो पार्टी बात करने के बाद आपके पॉइंट्स आप बता सकते हैं। उस दौरान आपको अगर आपने नोट्स कुछ बनाने हैं या एंट्रीज करनी है आप वो कर सकते हैं, और आप उसको रेफर करके आपका जब टर्न आएगा आप तभी बात कीजिए। इस पूरे दौरान में वी आर नॉट यूजिंग एनी रिकॉर्डेबल डिवाइसेस। आपके मोबाइल फोन्स वगैरह कोई रिकॉर्डिंग वर्बल या वीडियो करना नहीं है, इट इज नॉट अलाउड। एज आई सेड देयर इज नो प्रेजुडिस। आपको ये वेन्यू जो बताया है, जो अपना इंस्टीट्यूट है, ये कॉन्फ्रेंस रूम्स जो हैं 2 रूम्स है अपने पास। ये इसमें एसी है, पानी है, चाय कॉफी है। और आपका बच्चा अभी 5 महीने का है तो आपको बीच में अगर फीडिंग करना है या आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए तो देयर इज अ रूम प्रोवाइडेड ऑन द साइड, यू कैन यूज दैट रूम फॉर फीडिंग एंड योर टू टेक केयर ऑफ द बेबी। And at any point, if any of the parties feel that there is something that they need to get across to me privately, please let me know. Otherwise, we hope that at the end of the process, you reach a solution that you all can sign a final agreement and have with the help of your lawyers and get it notarized by the court. Everything that I have told you so far, if it is agreeable to you, please sign the agreement with the institute and with the mediators present. You can refer to any of the points which I have already written. It is already mentioned in the agreement. Fees also have been mentioned. At the end of it, if the agreement goes through, I think we are going to be very positive that we are going to reach a solution. And I wish you all the best.
I think I'll turn it over to Sunu now. Yeah, you pretty much covered everything, Preeti. And just to know okay, whether they have understood all this. I mean, do you consent to all this? I would just like to ask the two parties. Yeah, Have you understood and do you consent to all this? I understood. I have only one query, if I Yes. can ask. I've been a gynecologist. There are many times, deliveries on the anvil and issues like that. So you asked us to keep the mobiles off. So can I keep it on, but I'll keep it on Yeah. silent mode. I Silence. will take it only when it's an emergency. Will that be allowed? Yeah, that is allowed. Yes. Yeah. Thank you so much. Okay. मैडम जी, हमारे जो फातिमा जी हैं, उन्हें अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, तो अगर बात करनी होगी उन्हें ना, तो उनसे हिंदी में बात करनी होगी। क्या है कि हमारी क्लाइंट जो है वो बहुत ही देहात से है, और मतलब जिंदगी बम्बई में गुजार रहे हैं, लेकिन बड़े तो वहीं हुए हैं, तो आपकी आधी बातें शायद उनकी समझ में नहीं आई हैं। फातिमा जी, क्या आपको सब समझ में आया है और आपको ये करना है? हाँ, कुछ कुछ समझ में आया है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतने बड़े बड़े डॉक्टर मेरे सामने बिठा के रखे हैं और मेरी कंप्लेंट एक डॉक्टर के सामने है, तो मुझे क्या यहाँ पे मेरी कौन सुनेगा? मुझे नहीं, हम ये चीज दोनों साइड का कंप्लेन सुनेंगे। उतना एश्योरेंस दे सकते हैं आपको, क्योंकि हमको ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। हम कोई भी जी, हमारी साइड। क्लाइंट जो है ना वो बहुत सहम सॉरी, Deepa ji, I don't know the Hindi equivalent of conflict of interest. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। नहीं, हम किसी का भी साइड नहीं लेंगे, हम दोनों को इक्वल जाते हैं ये टाइम बात को। देंगे। फातिमा जी, समझिए कि ये जो बैठे हैं ना डॉक्टर साहब दोनों, डॉक्टर साहब हैं, लेकिन कैसा है कि वो ना आपके साथ है ना आपके विरोध में है, और ना शिखा डॉक्टर के अगेंस्ट है ना शिखा डॉक्टर के साथ है। ये दोनों जो है ना, ये अपना जो मसला है वो सुलझाने के लिए आई हैं, और ये सुलझाने के लिए जो आई है ना, तो उन्हें हमको जो अपने साथ बीती है ना वो अपनी भाषा में बताना है। उन्हें हिंदी समझ में आता है, भले ही उनका उनका अंग्रेजी हमें समझ में नहीं आए, लेकिन इनका जो हिंदी है ना ये हमें समझ में आएगा, अपना हिंदी इनको समझ में आएगा। तो अपनी बात अगर हम इन्हें बता सकते हैं ना तो बहुत बेहतर होगा। पर फातिमा ये जी, मेरी आप बात सुनेंगे भी क्या? फा- ये खुद एक डॉक्टर है, तो ये तो फिर दूसरे डॉक्टर की बात सुनेंगे ना, मेरी बात थोड़ी ना सुनेंगे। फातिमा जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम दोनों हिंदी में बात कर सकते हैं, और आप बेझिझक हमसे आपकी समस्या, आपके जो विचार हैं, आपके जो प्रॉब्लम है, वो बेझिझक हमसे बात कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से आपको गारंटी देते हैं कि हम साइड नहीं ले रहे हैं किसी का। हम भले ही डॉक्टर हों, लेकिन हमारा मसला अभी आपका प्रॉब्लम सुलझाना है, और इसके ये जो प्रोसेस आप जो कर रहे हैं, जिसके लिए आप अभी आए हैं हमारे सामने, ये अगर आप इस दौरान सुलझा सकते हैं तो आपको आगे चल के, अगर इसका आपके लॉयर ने आपको समझाया है कि जो दूसरे जो ऑप्शन है या दूसरे जो सवाल है, उससे बेहतर आपको अगर ये हो जाता है तो आपके फायदे में ये प्रोसेस होगा। ये फातिमा जी, एक बात समझ लीजिए, अगर कोई बात समझ में नहीं आएगी ना तो हम है बैठे हुए यहाँ पे, आपकी बात यहाँ तक आई है ना, इसके आगे भी हम लोग जाएंगे। तो थोड़ा इन पे विश्वास रखिए, थोड़ा हम पे विश्वास रखिए, और दिल खोल के बात करिए। दीपा, you're ठीक है, the अभी lawyer? आप बोल रहे हैं तो फिर चलिए आप। Okay, you're the lawyer. I mean, I didn't get your role in this. What? I thought I was the lawyer. I mean, if I'm not, Okay. No. I'm happy. I just want to know what you're speaking like one. I'm supposed to be Yadav, so I'm speaking like Yadav, yeah. Okay, done. Okay. Yeah. Okay. So, Sunu, you shall we Yeah. get on? They've already Yeah, agreed. yes. Sure, फातिमा, sure. have you? फातिमा जी, आप समझ गए अभी? आप हाँ, तैयार अभी हैं? हाँ ठीक है, अभी आप बोल रहे हैं तो फिर आपके भरोसे चल रहे हैं। विश्वास रखिए, ये प्रोसेस पे विश्वास रखिए, ये बहुत फायदेशील रहता है। आप दिमाग ओपन माइंड, व्हाट इज ओपन माइंड इन हिंदी? ना मुझे प्रॉब्लम। खुले दिमाग खुलकर, से, हाँ, हाँ, खुले दिमाग से थोड़ा सा इस पे
काम थोड़ा देख लीजिए, फिर आपको एक खुद अंदाज आ जाएगा कि हम साइड किसी का नहीं ले रहे। ठीक है। अभी ठीक। मुझे करना क्या है मैडम? मुझे वो हाँ, अभी तो अभी आप करना। आप बताइए कि आप इधर क्यों आए हैं? देखिए मैडम, ये डॉक्टर शिखा जी है, इनके पास मैं काफ़ी सालों से जा रही हूँ। मेरे पहले की मेरे मेरे मुझे 3 बच्चे हैं। मेरे बड़े 2 बच्चे जो पहले हुए थे, वो भी ये शिखा डॉक्टर के पास ही हुए थे। तो डॉक्टर तो अच्छी है, मेरा ऐसा कुछ डॉक्टर का कंप्लेंट नहीं है, मैं डॉक्टर के पास हमेशा जाती हूँ। मेरा दूसरा बच्चा जब भी हुआ था, तभी डॉक्टर ने मेरा स्टरिलाइजेशन का उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि ये आप करो, आपके लिए अच्छा है। और हमने भी सोचा कि ये ज़रूरी है हमारे लिए, तो फिर हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, तो हालाँकि हमारे धर्म में अलाउड नहीं है, फिर भी हमने इसको करा है। तो उसके बाद से भी हम मुझे तीसरा बच्चा हुआ है। अभी तीसरा बच्चा जो हुआ है, उसको तो कैसे अभी मेरे पास है ही नहीं इतना पैसा कि इसको बच्चे को आगे ये करे। अभी ये डॉक्टर की गलती है, उनकी वजह से हुआ है, तो अभी डॉक्टर को ही भुगतान देना पड़ेगा उसका पैसा। उसके बड़े होने तक उसका खर्चा वर्चा मैं कैसे करूंगी? तो मेरा यही एक है कि बस मुझे मेरे बच्चे की देखभाल के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा मुझे डॉक्टर देंगे। हम्म, तो you want to summarize? Should I? ये समराइज। तो फातिमा जी, आपका आपके जो प्रॉब्लम है वो समझ गए हैं हम। आपका मेन इंटरेस्ट है आपके बच्चों का फ्यूचर, आपको ध्यान में आपको सुरक्षित रखना है। ठीक है ना मैं हाँ जो जी, हाँ बता रही जी, हूँ? हाँ जी। हम्म। हम इसमें और बात कर कुछ सकते हैं क्या? और कुछ बताना चाहेंगी आप फातिमा जी? हमारे वकील बता सकते हैं हमारी लिए ज़्यादा, हमने तो बस इतना जितना बताना था बता दिया हमारी तरफ से। ओके। वकील जी के I mean, I would love to hear you, but I think we're supposed to not allow the lawyers to speak too much. So, हम जो है अब यादव जी के पास थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन अभी डॉक्टर शिखा का भी सुन लेते हैं। ये एक हम्म। मिनट, आप पहले आगे जाने से पहले ये बात तो समझिए कि हमारी कहना यह है कि शिखा जी की गलती हुई है और हमारे क्लाइंट को बच्चा हो गया। अब ये बच्चा जो यादव जी एक मिनट सॉरी मैं बीच में टोक रही हूँ, लेकिन पैदा हो गया है ना, हमें तब जो फिर है भी ठीक से बात करिए, बराबर बताइए। यादव जी, हम जो है प्रॉब्लम सुलझाने के लिए आए हैं, बराबर? तो इसलिए हमें दोनों साइड का सुनना है। हम लोग एक एक करके सुन रहे हैं। हमने ऑलरेडी आपको गारंटी दी है कि हम लोग साइड नहीं ले रहे हैं। हमें अभी जो है प्रतिमा जी की सब जो उन्होंने अभी बताया वो सब समझ में आ गया है। उनका जो बच्चों के लिए उनको उनका फ्यूचर सुरक्षित रखना है वो भी समझ में आ गया है। अभी हमें जो है डॉक्टर शिखा से भी सुनना है कि उनकी तरफ से वो क्या बोलना चाहती हैं। तो एक जैसे हमने रूल अभी बताया है, सेट किया है कि एक पार्टी होने के बाद आप दूसरी पार्टी से भी सुन लेंगे। तो आप प्लीज थोड़ा आपके नोट्स आप लिख लीजिए, आपके पेपर आपके सामने है, वो जॉट डाउन कर दीजिए। उनका बोलने के बाद हम लोग ये भी लेंगे। डॉक्टर Just, just डॉक्टर move in शेखर here. Can I just move in here? Two things. See that neutrality part, because since she keeps saying that you are a doctor, if you can say also you are a trained mediator. Here you are sitting in the position of a trained mediator and you are not sitting in the position of a doctor. ओके, गॉट इट। See, that gives the content वकील की, मैं डॉक्टर की हैसियत से यहाँ नहीं बैठी हूँ, मैं एक mediator मध्यस्थ की हैसियत से बैठी हूँ कि दोनों की मदद इक्वली करूंगी। न्यूट्रलिटी मीन्स मैं दोनों की मदद करूंगी इक्वली। करेक्ट? दिस विल इंस्पायर कॉन्फिडेंस। देन डोंट वरी, आपके वकील साहब यहाँ हैं, आप वकील साहब को अपने ट्रस्ट करती हैं। कुछ भी यहाँ पे जो फैसला होगा आपकी वकील साहब की मदद से और उनकी मर्जी से ही होगा और आपकी मर्जी से ही होगा। दैट अगेन गिव्स देम कॉन्फिडेंस। एंड ऑल्सो प्लीज डोंट स्टॉप द लॉयर, because you keep stopping the lawyer,
आप उनको जब वो कहना चाह रहे हैं ना, बोलिए वकील साहब 2 शब्दों में सिर्फ बताइए इसमें लीगल इश्यूज क्या खड़े होंगे. You just want to keep him short, but then you must permit him to say something. Don't stop him. And secondly, see, there's a beautiful thing she said, doctor to अच्छी हैं. If you had summarized that and then you went to Shikha, शिखा का आधा तो like you know any adversarial mood खत्म हो जाएगा. Okay. शिखा जी, आपने सुना, उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर, पर उनकी ये प्रॉब्लम है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? Repeat the good things that were said about the other side. See, after all, your purpose as a mediator is to create an atmosphere and repeat those good words which the other party wants to hear. If a person has expressed good words, repeat them. Summarizing is that only. So whatever But she this will not, summarized, this will not have a kind of a bad effect on the party. I mean, I was going to say it, but I thought that if I say it and Fatima decides that I have only taken that part, will that no. not? फातिमा जी ने जैसे, शिखा जी, जैसे फातिमा जी ने कहा कि उनको, वो सोचते हैं आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बट उनको ये प्रॉब्लम हुई जिससे वो वरीड है और उनका आज ये इशू है. Then highlight whatever she has said. But this, if you begin paraphrase it with this particular sentence, her animosity, adversarial, she will drop her guards. That's the only way. Rapport building, beginning mein atmosphere create karna, all these things are part of that. Continue. Sunu. Yeah. Okay, डॉक्टर शिखा जी, जैसे फातिमा जी ने अभी बताया था कि आप बहुत अच्छी डॉक्टर हो, फीमेल ओनली ना शिखा है, बहुत अच्छी डॉक्टर हो. फिर भी ये जो उनके साथ अभी अनवांटेड जो प्रेगनेंसी हुआ है, उसके बारे में जरा थोड़ा आप कुछ बताना चाहेंगे? She is upset about it. The emotion, catch that emotion. She's very upset about it. हाँ, तो वो अपसेट इज व्हाट, वो उससे बहुत अपसेट है, तो उसके बारे में जरा आप कुछ बता सकते हैं? डॉक्टर साहिबा, मुझे खुशी है कि वो मानती हैं कि मैंने उनका देखभाल किया है पहले 2 प्रेगनेंसी में भी. मैंने उनको अच्छा सा डिलीवरी कंडक्ट किया है. और मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि ये केस में हुआ क्या था. मेरा एमडी गायनेक होके लगभग 20 साल हो चुके हैं. और मैं अलग प्रकार के ऑपरेशंस वगैरह करते आई से आया हूँ. सॉरी, ओके. आई कांट. आया हूँ. और ये जो स्टरिलाइजेशन के प्रोसीजर्स होते हैं वो नॉर्मल है. और उनके जो रिलीजन में उसको मान्यता नहीं है, फिर भी उनको वो बताना मेरा कर्तव्य था कि क्योंकि वो लोग जो काम करते हैं और उनका जो वेतन रहता है उसमें उनका गुजारा होना मुश्किल रहता है. और मैं इस फैमिली को लगभग 15 साल ऑलमोस्ट मैंने प्रैक्टिस चालू किया, तब से मैं फातिमा जी को जानता हूँ. और वो मेरे पास हर बार ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और कभी कभी सलाह लेने के लिए भी आते हैं. तो एक परिवार की तरह उनको मैंने ट्रीट किया है. और कभी कभार जब उनके पास पैसे नहीं रहते थे तो मैं उनको कंसेशन भी दिया करता था. तो ये प्रोसीजर क्या है उनको मैंने अच्छी तरह समझा दिया है. उनके पास उनके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं और उनका देखभाल करना उनको थोड़ा सा कठिन जाता है फाइनेंशियल पॉइंट से. इसीलिए उनको ये राय दी गई थी कि स्टरिलाइजेशन प्रोसीजर भी होता है. और उन्होंने ये समझा और फिर कंसेंट, उन्होंने सम्मति दी कि ये प्रोसीजर के लिए वो आगे बढ़ेंगे. जब हम कंसेंट लेते हैं उसके पहले उनको
जानकारी देते हैं कि ये प्रोसीजर क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, उससे क्या नुकसान हो सकता है, ये प्रोसीजर नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, और कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, और उसको हम कैसे उसको कम करते हैं। तो ये प्रोसीजर एक सिंपल प्रोसीजर है। अगर मैं इधर सबको समझा सकूं कि इसमें हमने एक्चुअली क्या किया है, वाइट बोर्ड भी यूज करने का मुझे परमिशन मिले तो मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। इसमें बेसिकली क्या है कि जो यूटरस होता है या जो ग्रंथि होती है उसके दो लिम्स होते हैं, जिसको हम एक रिंग जैसा डाल देते हैं, ताकि जो ये एग जो है वो यूटरस के बॉडी में आके वहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। तो ये जब हम उसको लाइगेट करते हैं या उसमें एक थ्रेड डाल देते हैं और वो रास्ता ही बंद कर देते हैं, वो टनल को ही बंद कर देते हैं जहाँ से वो अंडा मेन पार्ट में आ जाता है। तो ये सब समझाया था। और ये जो ऑपरेशन होता है ये ह्यूमंस में है, ये कोई मैकेनिकल पार्ट्स नहीं है कि एक बार बिठा दिया तो वो एग्जैक्टली वैसे का वैसे रहे। उसमें मैकेनिकल पार्ट्स में भी वेर एंड टेयर होता है। ह्यूमन बॉडी में कैसे होता है कि बॉडी ट्राइज टू वो उसमें नेचुरल चेंजेस होते हैं। प्रोसीजर होने के बाद अनेक बार वो रिकैनलाइज हो जाता है। अगर उसको कट भी किया है, बॉडी का एक प्रक्रिया ऐसी होती है कि उसको होम्योस्टेसिस या बॉडी अपने आप हील होने लगता है। और वो प्रोसीजर में कभी कभी ये ट्यूब्स जिसको हमने काट दिया होता है, उसका एक पार्ट को काट दिया होता है, वो जॉइन भी हो सकते हैं। ये बहुत ही रेयर है। मीन्स 100 में हो सकता है सिर्फ 3 को ऐसे होता है। हम लोग जितना भी केयर ले उसके बावजूद है ये हो सकता है। लोगों को ऐसे लगता है कि कोई गलती हुई है या कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है तो उसका मतलब है कि वो डॉक्टर की गलती है। बट ये जो मेडिकल फैक्ट्स हैं, ज्यादातर लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो इस वजह से, और ये हमारे टेक्स्ट बुक्स में है, हम दूसरे गायनेकोलॉजिस्ट को पूछेंगे या कहीं पे गूगल सर्च करेंगे, जर्नल्स में देखेंगे, टेक्स्ट बुक में देखेंगे, यहाँ पे सब जगह पे इसके बारे में जानकारी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का भी एक निर्णय है जिसमें ऐसे कहा गया है कि स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर फेल होता है तो उसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल है, उसके अनेक कारण भी रहते हैं। तो इसमें एक कारण था कि हमने उसका एक्सीजन किया, वो प्रोसीजर सही था, 2 साल के लिए उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं था। और कंसेंट देने के बाद और जो अब हम डिस्चार्ज भी करते हैं पेशेंट को, हम पूरी तरह से जानकारी देते हैं कि आप क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। कुछ पीरियड्स वगैरह मिस हुआ तो हमको तुरंत आके दिखाना चाहिए। बिकॉज द ओनली वे कि टोटल स्टेरिलाइजेशन हो तो पूरा वो यूटरस ही निकालना पड़ता है या उसको कॉटराइज करना पड़ता है। ऐसे प्रोसीजर्स तो हम नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि हमारा मेन एम उसको तकलीफ देना नहीं है, बट वो स्टेरिलाइजेशन या बच्चे और नहीं होना चाहिए, इसके लिए एक मेजर लेते हैं। तो ये फुल प्रूफ नहीं होता है, और ये हम हर पेशेंट को उसके बारे में जानकारी देते हैं। और हम चाहते हैं कि जब कभी उनको लगे, अभी ये हमारे पास 4 महीने के बाद आए जब उनका पीरियड्स मिस हुआ था, और हमने उनको समझाया था कि 1 महीना मिस हुआ, 1.5 महीना मिस हुआ तो हमको आके बताना चाहिए। और क्या क्या प्रिकॉशन और भी जो कॉन्ट्रासेप्शंस के मेजर्स हैं उनको भी लेना आवश्यक है, इसके बारे में भी जानकारी दी गई थी। तो कभी कभी बोलने के बावजूद और उसके बाद भी वो बीच बीच में हमारे पास आती थी, दिवाली के समय, ईद के समय वो हमको मिलने आती है। तभी भी हमने उनको समझाया था, बट शायद वो उनके काम में और बिजी रहते हैं तो अपने पैसा बनाने के इसमें चक्कर में रहते हैं। तभी शायद वो उनके जहन में रहा नहीं गया होगा। तो
यही मेरा डिफेंस है कि मैंने तो वो प्रोसीजर जो तरीका है उस अनुसार ही किया है, बट हो सकता है कि ये जो नेचुरल प्रोसेस है ऑफ रिकैनालाइजेशन उसकी वजह से वो हुआ है। यही मेरा कहना है। क्या मैं भी कुछ बोल सकती हूँ? जी केतकी जी, अ, शिखा जी सर। एक्चुअली कैसे हुआ था कि ऑपरेशन के टाइम तो उनको समझाया था कि कभी कभी ऐसे फेलियर का रिस्क होता है, पर वो उस टाइम तो इतना ये नहीं ध्यान नहीं देते हैं। और 4 महीने बाद जब वो आई थी तभी भी उनको समझाया था कि ये अबॉर्शन करके मिलेगा, वापस ऑपरेशन भी करके मिलेगा। तो उन्होंने उसके बावजूद सोच विचार करके निर्णय लिया कि नहीं, हमको ये बच्चा पैदा करना है। तो उन्होंने बच्चे के पैदाइश के बारे में कुछ सोच के ही तो ये निर्णय लिया होगा। ऐसा समझ के हमने उनका रिस्पेक्ट कर दिया कि ठीक है, उनको अभी अबॉर्शन नहीं करवाना है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो हमने उनका बाकी प्रेगनेंसी का केयर भी उनको दिया है, डिलीवरी भी में करके दिया है। और उसके बावजूद अभी अचानक ही हमको अगर नोटिस आ गया तो हम भी एकदम से बौखला गए कि ये क्या हो गया, इतना 25 लाख रुपया बच्चे की इसके लिए मांग रहे हैं। तो हम भी बहुत अचंभे में पड़ गए हैं और हमको भी बहुत बुरा लग रहा है कि सामने से बोलने से एकदम लीगल नोटिस कैसे भेज दिया हमको। ये भी ये हो रहा है। तो ऐसा तो कोई गलती तो हमसे हुआ नहीं है, ये तो नॉन कॉम्प्लिकेशन है, तो उसके लिए हम लोग इतना 25 लाख रुपए कैसे दे दें? अभी मेडिएटर साहब ये देखिए, डॉक्टर ऐसे बड़े बड़े कुछ चीजें बोलेंगे तो हमको तो ये चीजें समझ में आती नहीं है। डॉक्टर हमारे लिए इतने सालों से जा रहे हैं, जैसे डॉक्टर जो चीज बोलते हैं हमारे लिए, तो बस जो डॉक्टर बोलेंगे हम करेंगे वो चीजें। इतनी सारी चीजें समझ में आती, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। तो जो डॉक्टर बोलेंगे हमारे लिए भगवान जैसे है। डॉक्टर ने बोला ये करो तो हमने कर लिया। अभी ये नहीं हुआ है। एक एक चीज तो हमने एक बार ऑलरेडी, जब ये डॉक्टर ने बोला ये करने के लिए, तो हमारे रिलीजन में अलाउड नहीं है, फिर भी हमने किया। अभी वापस बच्चा गिराने की बात करते हैं, ऐसे थोड़ी ना, हमारे में तो ये चलता ही नहीं है। ऐसे कर नहीं सकते हम लोग। ये बोलने के लिए बहुत इजी है इनके लिए, डॉक्टर के लिए, बट हमारे लिए नहीं है इतना इजी। और उसके बाद ये जो डॉक्टर बोल रहे हैं कि पैसा बनाने के इसमें, तो हमारा काम ही है, हम तो रोज का कमाते हैं, रोज का खाते हैं। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है और हमें ये सब चीजें नहीं समझ में आती है। जो अभी इन्होंने बोला, इनकी इनकी वजह से, अगर इनको मानना तो पड़ेगा कि इनकी वजह से ही ये जो हुआ है वो उनकी वजह से ही हुआ है। और अभी हमारे पास तो दूसरा कोई चारा है ही नहीं, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? फातिमा जी। लेकिन हाँ, हाँ, सॉरी सर, sorry. गो अहेड। फातिमा जी से हम फातिमा जी, ये 2 बातें और बताना चाहते हैं, बताएं क्या? हाँ संक्षिप्त में हाँ बताएंगे। हाँ हम लीगल पॉइंट हमें बात करनी होगी, तो लीगली तो इनका ऑपरेशन हो चुका है, इनका ऑपरेशन फेल हो चुका है, तो इनको कॉम्पनसेशन तो मिलना चाहिए ना। अब वो अ, गरीब है, उनको समझ में कम आता है। लेकिन ऑपरेशन बात करने के पहले, सॉरी, आप कंप्लीट कीजिए। हमको हमको बात खत्म करने दीजिए हमारी। देखिए हाँ, कैसा सॉरी सॉरी। ऐसा है कि ये शोषित वर्ग है, इनका हक है, इनके अधिकार हैं। अब इनको इनका अधिकार समझाएगा। डोंट मेक मी लाफ नो। आई लव योर एक्सेंट। टॉक सो वेल, यू नो। इनके हक, इनके अधिकार तो इनको किसी ने दिलाने चाहिए ना। इसलिए तो हम हैं। फातिमा जी, आप जरा भी डरिए नहीं। ये बड़े बड़े डॉक्टर जो है ना, ये अपनी 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 तरफ से बात करेंगे। फातिमा बट जी, मैम आप यादव एकदम हाँ लीगल जी, तरीके हाँ से जी, क्यों देखते वकील हैं? वकील साहिबा, सिर्फ आप लीगल ही तरीके आप से क्यों शिखा देखते देखिए, हैं? तो डॉक्टर ये बड़ी शिखा बड़ी। हेलो यादव हेलो। जी, यादव हाँ, जी, हम यादव जी वन बाय आप। वन बात करेंगे। जी, हाँ हो गई हमारी बात। हमने बता दिया कि ये शोषित हाँ पीड़ित वर्ग से हैं। इनको बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है। ये यादव जी, ऑपरेशन खत्म होने के बाद, ऑपरेशन करने के बाद, सर्टिफिकेट लेने के बाद इनको बच्चा रहा है। उनको ये सिंपैथी पे क्यों कंपनसेशन। जा रहे हैं? ठीक है ये ठीक है। अच्छा अच्छा, सिंपैथी। या सुनिए अभी। हाँ, ओके। फातिमा जी, आपने ऑपरेशन ऑपरेशन होने के पहले डॉक्टर ने आपको सब डिटेल में समझाया था, जैसे अभी उन्होंने हमें समझाया। Sonu, और shall we just summarize 2 lines of ओके, Dr. Shikha first? यस। I'll tell it in English. I can't translate it in Hindi. So, डॉक्टर शिखा ने जैसे अभी बताया, उनकी इतने साल से आपके फैमिली को और आपको ट्रीट कर रहे हैं।
घर जैसे आपको ट्रीट कर रहे हैं, और आपके बेस्ट इंटरेस्ट से ही आपका सब ट्रीटमेंट चल रहा था। और उन्होंने ये भी बताया है कि जो भी प्रोसीजर किया है वो उन्होंने अपनी तरफ से पूरे डिलीजेंस से किया है। और ये जो सिचुएशन है वो अनएक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन वो लो है। तो आपकी तरफ से हमें ये जानना है कि आपको ये इन्होंने जो अभी बताया है वो आपने कितना इसके बारे में आपको कितनी जानकारी है। और फातिमा जी, आपके जो लॉयर हैं यादव जी, उनकी सलाह से ही हम आगे जाएंगे, और हमें आपका जो पॉइंट है वो बहुत क्लियरली समझना है। और यादव जी के बीच बीच में जो लीगल एडवाइस है वो भी हम लोग लेंगे, लेकिन हम लोग दोनों पार्टी को सुनेंगे। देखिए, डॉक्टर साहिबा ने ऑपरेशन के पहले कुछ चीजें बताई थी, बट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, बड़ी बड़ी चीजें आपकी बातें हमारे ऊपर से तो जाती है। हमको तो बस जो डॉक्टर सलाह देते हैं कि ये करो तो हम करते हैं, बिकॉज हम सोचते हैं कि डॉक्टर जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। भगवान जैसे हमारे लिए जो बोलेंगे हम सुन लेंगे, उसके पीछे क्या है क्या नहीं है इतना सब समझने के लिए थोड़ी ना हमारा कुछ पढ़ाई लिखाई तो हुआ नहीं, हम कैसे समझेंगे ये सब चीजें। हम बिल्कुल समझ में नहीं आता। अभी भी डॉक्टर साहिबा ने जो भी बताया हमें कुछ समझ में नहीं आया। बस हमको इतना पता है कि डॉक्टर साहिबा ने बोला, हमने किया, अभी वो हुआ नहीं ठीक से, डॉक्टर साहिबा की गलती है। मेरे पास मेरा प्रॉब्लम है, मेरे प्रॉब्लम के लिए मुझे बस पैसा चाहिए, ये मेरे बच्चे को बड़ा करने के लिए। ये चीज मुझे इतना पता है बस। आपको वकील डॉक्टर साहब आप शिखा, कुछ बताएंगे, बोलेंगे, आप उनको जरा समझाइए, मेरे इनको समझ में नहीं आ रही है मेरी प्रॉब्लम। ये तो बस एक डॉक्टर की हिसाब से ही बस डॉक्टर के पॉइंट इससे बोल रहे हैं। ये हम आपकी बात समझा चुके हैं उनको, हम उनको 2-3 बार बोल चुके हैं कि हम शोषित पीड़ित हैं, और हमें जो प्रॉब्लम है ना वो पैसों वाली प्रॉब्लम है। बच्चा तो अल्लाह की देन है, वो तो हो ही जाएगा। वो तो उसका कोई रोक नहीं सकती। इन्होंने ऑपरेशन की भी तो गारंटी ली थी ना। वो इतना ही हमको कहना है कि हमारे पेशेंट, हमारे जो क्लाइंट है, उनको न्याय दिलाइए। फातिमा जी और यादव जी, यही हमारा काम है, हम लोग इसी के लिए ट्रेंड हैं। और इस ना नॉट न्याय, इट इज गेटिंग अ सॉल्यूशन। न्याय इज द रॉन्ग वर्ड आई यूज। नो 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 नो, हम इसी के लिए यहाँ है, नॉट न्याय। न्याय आई विल नॉट इवन यूज यार, हाफ द टाइम जब आपको यहाँ द वर्ड हाँ सो सो इसी के लिए हम यहाँ इस मीटिंग रूम में हैं। अभी हमें ये how do you say that, Sonu, how that we can understand her problem very well, हाँ, and हम we समझ understand, सकते हैं आपकी पीड़ा क्या है, अच्छी तरह से समझ सकते हैं। and that she had full faith in Dr. हाँ, Shikha all एक these एक years. टाइम ऐसा था जब आप पूरी तरह से उनको ट्रस्ट करती थी। 15 साल का रिश्ता है डॉक्टर के साथ, आपके 2 डिलीवरी की है उन्होंने। और ये जो ऑपरेशन के बारे में भी जो आपको बताया था, तो आपकी भलाई के लिए बताया था। वो समझ सकते थे कि आप तीसरा बच्चा बाकी 2 से ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया था कि ये करने से आपको बहुत फायदा होगा। और उस टाइम को आपको ये भी बताया था कि ऐसा 100 लोगों में से एक ऐसा चांस है जो इसमें जो ऑपरेशन करने के बावजूद भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ये मेडिकल हमारे बुक्स में लिखा है, टेक्स्ट बुक में लिखा है, जर्नल में भी ऐसा लिखा है। इसमें प्रूफ है कि ऑपरेशन करने के बावजूद भी 100 में से एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रेग्नेंट हो सकता है, जो उन्होंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया था। और ये भी समझाया था कि ऑपरेशन के बाद और क्या आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर सकते हैं इसके अलावा। तो ये ज्यादा ऐसा 100% कॉन्ट्रासेप्शन आपको मिल सकता था। तो हम अभी आपको पूछ सकते हैं कि आपको कुछ प्राइवेट सेशन में ऐसा कुछ जाना है हमारे साथ, डॉक्टर शिखा और नहीं, फातिमा जी। पहले मेरी हाँ बात सुन लीजिए। हाँ हाँ जी। प्राइवेट में जाने से पहले 2-3 बातें जो अभी उभर के आई है। एक तो
लॉयर साहिबा बता रही हैं कि गारंटी दिया गया है, तो कोई भी डॉक्टर कोई भी प्रोसीजर के लिए कभी गारंटी नहीं दे सकता है, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है वो कुछ एक फिक्स्ड मैकेनिकल स्ट्रक्चर नहीं है कि वो बल्ब लगाएंगे वो बल्ब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करता है वो हर पेशेंट का अलग अलग सिस्टम रहता है। तो गारंटी कोई भी डॉक्टर नहीं देता है, ना ही इस केस में मैंने कोई गारंटी दी कि पूरी तरह से उनको बच्चा होगा ही नहीं। इसीलिए तो जो कंसेंट फॉर्म है, मैं कंसेंट फॉर्म भी लेके आया हूँ, आप देख सकते हैं, उनके लॉयर भी देख सकते हैं, उनकी भाषा में हिंदी में ही लिखा है, ऐसे नहीं कि अंग्रेजी में लिखा है। उनके हस्बैंड के साथ उन्होंने पढ़ा है, उनको वो स्ट्रक्चर समेत मैंने उनको एक्सप्लेन किया था कि ये प्रोसीजर में एक्चुअली होता क्या है। तो दूसरी ये बात है, मैं जानता हूँ कि उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, इसीलिए तो मैंने उनको कॉन्ट्रासेप्शन या स्टरिलाइजेशन की प्रोसीजर के बारे में जानकारी दी थी। वो अगर मेरे मन में नहीं होता तो मैं क्यों देता उनको वो राय। तो वो एक है, और कॉम्प्लिकेशन होना, कोई भी गलत जाना, वो डॉक्टर का ही गलत होने का नतीजा है, ये समझना एक भूल है। ये तो मैं समझाना चाहता हूँ, ये प्रोसीजर के पहले भी समझा चुका हूँ और अभी भी समझा सकता हूँ कि ये इसमें क्यों ऐसे हुआ है। ये बहुत अनकॉमन है, अभी मेरे 20 साल के प्रैक्टिस में कभी ऐसे हुआ नहीं है, ये पहले केस है। तो मेरे अनुभव, मेरा जो क्वालिफिकेशन है, ये उस आधार से मैंने किया है। और वो प्रतिमा भी जानती है कि मेरा क्या अप्रोच रहता है पेशेंट के साथ। वो भी खुलकर कितनी बातें मुझे बताती हैं। वो क्या एक रिलेशनशिप में मैं किसी पेशेंट को के साथ अन्याय नहीं करना चाह रहा हूँ। मेरा इतना ही कहने का मकसद है कि अगर पेशेंट को कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ है तो हर बार डॉक्टर को क्यों जिम्मेदार ठहराया जाता है। पहले जानना, मैं जानता हूँ कि वो बोल रही हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हम कंसेंट जब लेते हैं तब हम बोलते हैं आपको कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा, हम इधर आपको समझाने के लिए बैठे हैं। जैसे आपने जब अभी चालू किया, आपने बताया कि ये क्या मीडिएशन क्या होता है, आपने कंसेंट लिया हमसे कि उस दौरान हम एक दूसरे के बात को नहीं काटेंगे और वो सब। तो हमने समझ ली बात, और जो बात मुझे नहीं समझ में आया कि मुझे फोन बंद रखना है कि नहीं, मैंने आपसे पूछ लिया। वो भी अपॉर्चुनिटी, वो भी उनको मैंने अपॉर्चुनिटी दिया था, उनको, उनके हस्बैंड को, क्योंकि ये निर्णय सिर्फ फातिमा जी नहीं लेती है, उनका हस्बैंड और वो मिलके वो डिसीजन लेते हैं। तो जब ये सब प्रक्रिया हो चुकी है डिस्कशन का, तब वो उन्होंने बोला वो समझ गए हैं। और जो चांस है, वेरी मिनिमल चांस, 3 आउट ऑफ 100, 100 में से 3 जनों को ऐसे होने का चांस होता है। हम नहीं चाहते कि हमारा कोई पेशेंट को हमारी वजह से तकलीफ है। हमारी क्या दुश्मनी है फातिमा जी आपसे कि हम ऐसा कोई करे जिससे आपको नुकसान हो जाए। आपने 20 साल में मेरे जो पेशेंट्स मेरे साथ आते हैं, कभी आपने ऐसे देखा है कि कोई मेरे पे चिल्ला रहा है या मैं किसी को बराबर नहीं समझा रहा हूँ? तो आप बोल सकते हैं ये सब। तो यही मुझे कहना है। आगे आपको जो सही में लगे, हम लोग प्राइवेट सेशन भी में जा सकते हैं। डॉक्टर मैं एक शिखा मिनट हमारे फातिमा जी को समझाना चाहती, एक मिनट उनसे बात करना चाहती हूँ। फातिमा जी, कैसा है कि ये प्राइवेट सेशन जो होता है ना, इसमें ये हमको अपनी बातें जो है, जो हम सबके सामने नहीं बोल सकते, वो सब बातें इनको वहां जाके बोल सकते हैं। अगर आप अग्रीड है ना तो ही जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं होता कि इसमें कोई पक्षपात होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब को मिलके वो डॉक्टर साहब की बातें हमें बताना चालू कर दें। हमें हमारी बात भी वो पूरी सुन के लेंगे, उनकी बात भी सुन। आप तो भी अगर आप रहेंगे वकील साहिबा वहां पे? can वो can आप can we summarize Dr. Shikha's statement now, or we just proceed with this? Basically, I just wanted to say that he has the best interests and
of the patient in mind, and that So we already said that when we yeah, summarized first. So no, I I think know, we should but go for the we private should go for session. this. Okay, and that he was upset with the situation. That I think 2 lines. I think every time they say we have to summarize, right? Priti, every time if you summarize, Yes, sir. you know, take out the good. I said, see, reframe. Okay. Take out the sting, the good things that are said, you know, which will Yeah. create a Yeah. nice atmosphere. Always summarize. Yeah, so that's what I said. I mean, again, Okay. what I could get Just out with summarize. this is that he only had her best interest in mind, and that he treated her like family, and that he is very upset with the situation as of at present, and he wants it resolved. So would that be okay to say it before we start the private session? Correct. Okay. In fact, I think you should here add that he has had a successful practice, and this is the first failure that he's had, because he even said that. I think at Yes. that point, he used that his surgeries have been successful till now. Probably that point should also. So And now, I just want to add one point that, okay, he is genuinely sorry this happened to Fatima. no, I don't think we should apologize for. No, he's genuinely sorry that this operation is whatever she is facing right now, though it is not his fault. So, I mean, that's what I said. I think he's just upset I with the don't- situation. yeah, So yeah. makes it more Yeah. doesn't get a bias in that. Okay. 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 Okay, so are we So having we the can- session with yeah. with Who- Fatima? Yeah. No, she's asked a question to you whether I can accompany her in the private session. You have to say yes or no. You Yes, can- yes, please. Is Yeah, that- that's Are lawyers please, allowed? Zaid. I Are don't- lawyers allowed in private sessions? I don't think there are. Yes. They You can Acha. come. you can meet with both lawyers and party. You can meet party separately, depending on what are the circumstances. First session, have the lawyer in with private session, no problem. Okay. ठीक है. You know, till the party starts trusting you. Okay. Till that stage, right now she is very like, you know, scared because she Yeah. feels कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये लोग आपस में इस तरह की बातें कर रहे हैं, Victimized. Yeah. बात समझ में नहीं आई, so she very scared. So she'll only trust her lawyer. At this stage, you need to have Okay. but All lawyer right. is the comforting factor. Okay, fine. And We're she's having the- doing a positive. You see, here I can understand if the lawyer was playing a negative role, then that may come into your mind, ki, how do I separate both? But the lawyer is playing a very positive role. So go ahead. Okay. So we Okay, are ठीक taking है. a session with Fatima and Fatima. Yadav. Yeah. Yeah. So Okay. the two of you can switch off your cameras so that you're not there. Okay. But they can still hear what is being Yes. discussed, right? See that Yeah. one way of doing that is like, you know, they can be put into the lobby. Ganda, you want to do that? I think to get that proper effect, it would be Yes. better if they put in the lobby. Yeah, so But in that case, we won't be able to get the sense out of it. This is a role play, that's why. Otherwise, you can put us, but Yeah, so that's what we were thinking, so that they could watch, they could continue Yes. watching what happens in the private session. And that's why we wanted to put them keep them with their cameras off. But if you all would be more comfortable that way, so then you all don't get to know the other side's facts at all and still be able to play the role play well, we can put them in the lobby. Yeah, What do you put say, them. Jim? Yeah, put them in them? the lobby. Okay. Yeah. Put them in the lobby then, Renalini. So now it's just us. हाँ. Okay. फातिमा जी आपको ये जो अभी जो हम करने वाले हैं, आपके लॉयर ने अच्छी तरह से समझा दिया है. आपको कोई कुछ कहना है उसके बारे में तो हमें बेझिझक पूछ लीजिए. और आप कंफर्टेबल हैं, आपको कुछ चाय वगैरह लेके आए तो आप आराम से बैठ के हमसे बात कीजिए. अभी जो डॉक्टर शिखा ने बताया है कि उन्होंने कंसेंट लिया है और आपसे बात की है, आप उसके बारे में क्या बता सकते हैं? हमें जरा प्लीज विस्तार से बताएंगे. देखिए, मैं डॉक्टर शिखा को हम इतने सालों से जानते हैं, उनके पास जा रहे हैं. बहुत अच्छी डॉक्टर है, बहुत अच्छा हमारे लिए किया है, इसके पहले सब कुछ किया हुआ है. वो उनके खिलाफ हमारी कोई ऐसे शिकायत है नहीं. पर अभी जो हमारे साथ हुआ है, उसकी कोई तो जिम्मेदारी लेगा. भाई हमारी उतनी है नहीं. उन्होंने जब भी हमको बताया कि ऐसा ऐसा कुछ करो तो तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हें आगे बच्चे नहीं होंगे,
तो हमने भी सोचा, अभी उन्होंने ये बताया, उनकी अच्छी बात है कि उन्होंने ये बताया हमको, हमने भी सुना, हमने भी सोचा, हमको लगा कि हाँ ये सही बात है, हमें करनी चाहिए। अभी जब उन्होंने ही बताया करनी चाहिए तो हमने कर भी ली, और अभी वो हुआ नहीं, ठीक से हुआ नहीं। तो उन्होंने तो बोला अबॉर्ट कर लो, बट अबॉर्शन हमारे इसमें नहीं चलता है, हम नहीं कर सकते हैं। फिर इसको जिम्मेदारी कौन लेगा? हमको तो कुछ इसके लिए भुगतान तो किसी से बनता है ना, हम कैसे इसको आगे करेंगे? जब भी डॉक्टर साहिबा ने बोला था कि ये करने के लिए जरूरी है, हमने मान लिया था। अभी नहीं है तो किसी ना किसी को तो उसका ये करना पड़ेगा। अभी डॉक्टर उन्होंने ही किया है, जो प्रोसीजर करना था उन्होंने ही किया है, अभी वो ठीक से नहीं हुआ है तो हमें कुछ तो उसके ये चाहिए। और हमने सुना है, ऐसे नहीं है कि हम ऐसे ही आए हैं, हमने ऐसे सुना है कि इसके पहले भी कि ऐसे कुछ लोगों को मिला है भुगतान, कहीं इससे हमारे जैसे ही केसेस हुए हैं लोगों के, और उनको भुगतान मिले हैं। हमारे वकील साहिबा आपको कुछ ज्यादा उसके बारे में डिटेल्स भी चाहिए तो बता देंगे। हमको उतना तो डिटेल पता नहीं, बट हमको पता है, हमारे पास एक मैडम आई थी, उन्होंने हमको सलाह दिया था कि नहीं आपको जाना चाहिए, आपको करना चाहिए। तो देखिए, करने के लिए तो कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे हम? मेरे बच्चे को ऐसे ही 2 के 3 हमको संभालने पड़ेंगे, जो 2 रोटी खाते थे 1 रोटी खा के निकालनी पड़ेगी। पर अभी गलती हुई है, और जैसे अगर पता है कि ऐसी चीजें होती है और मिलते हैं हमको, भुगतान मिलती है, तो हमें भुगतान चाहिए। आप बस हमें भुगतान दिलवा के दे दो। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आप प्रेग्नेंट होने के बाद आपको 4 महीने के बाद पता चला? आप पहले महीने में भी आपका वो पीरियड मिस हुआ, सेकंड महीने में मिस हुआ, तो आप 4 महीने के बाद क्यों गए डॉक्टर के पास? यानी कुछ ऐसा ये उसका जब भी कुछ कारण करा था? था, प्रोसीजर करा था, उसके बाद 1.5 साल तक मुझे पीरियड्स नहीं आए थे। तो मुझे तो समझ में नहीं आया था, तभी तो वो नॉर्मल था। तो ये जब भी ये वापस से हुआ था तो मुझे लगा वो भी है, ये भी वैसे ही नॉर्मल है, तो फिर ध्यान नहीं दिया मैंने। अभी हमको ना थोड़ी इतनी सारी चीजें समझ में आती है, और हमारे काम के गड़बड़ में बच्चों के बीच में कहाँ छोटी छोटी चीजों के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे हम लोग। तो ये था, उसकी वजह से हम लगा वो वैसे ही अभी ये भी हुआ है। और ये तो पूरा डॉक्टर पे विश्वास रखा था कि अभी कुछ होना नहीं है, तो वो तो ये चीज दिमाग में आई भी नहीं थी कि ऐसे कुछ हो सकता है करके। तो अगर मैं बराबर समझूं, आपने जो अभी बताया है कि आप डॉक्टर शिखा के ट्रीटमेंट इतने सालों से खुश थे, और उनकी जो भी उन्होंने जो आपसे बताया है अनुसार, जो आप उनसे सलाह ले रहे थे वो आप बराबर से फॉलो कर रहे थे, और आपके जो ट्रीटमेंट है वो आपके अनुसार सब ठीक चल रहा था। और ये जो प्रॉब्लम हुआ वो अ, अ, समझा समझा के प्रोसीजर जो किया हुआ था, जो आपने और आपके हस्बैंड ने साइन किया है, उसके बारे में जरा बताएंगे कि तभी क्या हुआ था? देखिए, जो हमें डॉक्टर साहिबा ने बताया था तभी, तो उनको हमने तो सिर्फ इतना ही चीज सोचा था कि अभी इसके आगे बच्चा नहीं होगा, तो हमारे लिए ये अच्छा है। डॉक्टर साहिबा ने हमको ये कैसे बच्चा, जितना ज्यादा बच्चा करेंगे वो कितना हमारे लिए खराब है, हमारे बाकी के बच्चों के लिए भी कितना खराब है, ये चीजें बताया था। बाकी सब जो भी डॉक्टर ने बोला वो सब हमारे कुछ दिमाग में नहीं आया। हमको सिर्फ ये चीज देखनी थी कि चलो इस ये करने से हमारे 2 बच्चे जो है उनके भविष्य के लिए अच्छा है, तो हमने वो सोच के हाँ बोल दिया था डॉक्टर को। और हम इसमें, इसमें कुछ ऐड करें क्या? हाँ फातिमा यादव जी, जी बोलिए। आप बोल रही हैं कि जब ये नोटिस भेजने से पहले हम लोग उनके क्लिनिक में गए थे, तब उन्होंने आपको डांट फटकार करके कैसे क्लिनिक में से निकाला था, और आपको कितना बुरा लगा था उस बात का? वो बात भी तो इन्हें बताइए ना। हाँ, ये भी है। ये जब भी हम गए थे उनके पास, बहुत तभी बढ़िया उन्होंने बता पढ़ाई रहे नहीं हैं। करा था उनको, हमारे साथ तो बदतमीजी से बात करी थी उन्होंने। कब देखो, कब गए थे? अभी? आप अभी की बात कर रही हो? नोटिस भेजने से पहले उनके ऑफिस में गए थे कि भाई हमारा ऐसा हाँ। ऐसा प्रॉब्लम है, तो हमने वो, उन्होंने कहा जो करना है वो कर लीजिए, तो हमने कर लिए।
अब करना है तो कर लीजिए। तो हमको तो एक ही बात आती है ना, अभी हमारा एनजीओ है, ऐसी औरतों को नहीं सपोर्ट करेंगे तो कैसे चलेगा? इनके लिए न्याय कौन देखेगा? इनका उनकी बात कौन समझेगा? अभी उनमें तो हैसियत है नहीं कि वो कोर्ट जाए। अभी हमारा एनजीओ खर्चा उठाएगा, जो लगेगा वो समय, न्याय मिलेगा, जब पैसा मिलेगा तब मिलेगा। अभी तो बच्ची को उसका बाप खिला ही रहा है ना। यादव जी, अब क्या इन्होंने है, जिस बोलिए। ऐसा है कि डॉक्टर ने भी समझना चाहिए। मैं उनको समझाना चाहती हूँ वॉटेवर, चाहती हूँ कि ये तरीका नहीं होता है। अगर अपने से गलती हुई है ना, तो थोड़ा सा समझ के चलिए और थोड़ा सा ना बात धीरे से करिए। और कैसा है कि अपने को ना संभल के लेना पड़ेगा कि अपने से गलती हुई है, जाइए वो कर लीजिए, कौन हम आपको रोकता है, कैसा ऐसे हो सकता है करके कितनी चिल्ला चिल्ला के बात हमसे किए थे। तो हम कोर्ट चले गए। अभी बैठिए, आइए मिलिए हमको, हम तो रोज कोर्ट जाते हैं। फातिमा जी को हम हमने वकीलतनामा ले लेंगे और हम तो कोर्ट में वैसे ही पड़े हुए हैं। ये भी आ जाएंगे हमारे साथ, बड़ी बात क्या है उसमें? आने दीजिए, अभी सीधा हो जाएंगे। तभी तो हमको 1.5 घंटा कंसल्टिंग में बिठाए बाहर, बहुत बहुत भीड़ थी ना। अब बहुत भीड़, हम अब छोड़िए सब और हमारे साथ बैठिए। और भीड़ भीड़ सब ना अपने क्लिनिक में रखिए। हमको तो बस इतना ही है। तो फातिमा जी गलत बोले क्या? आपको ना आपको 1.5 2.5 बिल्कुल घंटा कौन रखे? बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल यही तो बातें हैं। इसके लिए डॉक्टर के पास जाने के लिए डर लगता है। का समझ। पूरा तीसरा प्रेगनेंसी डिलीवरी वो सब किसने किया? वो डॉक्टर साहब ने किया। किसने? डॉक्टर शिखा ने? हाँ, लेकिन वो फ्री में थोड़े किए हैं, पैसा लिए ना। नहीं नहीं, मैं ऑपरेशन सिर्फ जानना का चाहती थी। पैसा लिए, डिलीवरी का पैसा लिए, हाँ जी, देखने का बिल्कुल फेल्यूर का बिल्कुल। पैसा लिए। बस ये तो छापा ही रहे हैं। यादव जी, कुछ ये प्रॉब्लम जो था डिलीवरी में और प्रेगनेंसी में? कुछ भी प्रॉब्लम ऐसा था? और क्या सब फातिमा जी एकदम आप बताइए, ये तो हम नहीं जानते। देखिए सेकंड टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, तो उन्होंने बताया था कुछ संभाल के रहना पड़ेगा वगैरह वो सब चीजें। बट फिर भी एंड में सब ठीक हुआ था, ठीक। सब ठीक हम्म, ठाक ही हुआ था। नॉर्मल हम्म। ही डिलीवरी हुई थी, तो कुछ दिक्कत नहीं थी। तो हमारे लिए वो कुछ इशू था नहीं। और तीसरे टाइम भी सब अच्छा रहा? सब अच्छा रहा। मुझे कुछ इसीलिए तो पता हाँ। नहीं चला ना डॉक्टर, कुछ समझ में ही नहीं आया। ये तो जब भी डॉक्टर के हम्म। पास, वो तो हमारी एक मैडम ने हमको बोला कि आप जाके एक बार डॉक्टर से बात कर लीजिए। बहुत जबरदस्ती के साथ उन्होंने भेजा, वरना तो हम हमारे पास 2-2 3-3 घंटा डॉक्टर के पास जाके बैठने के लिए कहाँ टाइम होता है। छुट्टी नहीं मिलती है, लोग इतना काम होता है दिन भर, सुबह निकलते हैं बाहर, रात को आते हैं, बच्चों को देखने के लिए टाइम नहीं रहता। बच्चे इधर उधर रास्ते पे घूमते रहते हैं, उनको देखने के लिए टाइम रहता है। तो खुद के लिए देखने के लिए कहाँ डॉक्टर के पास जाएंगे हम लोग। वो तो बड़ी जबरदस्ती के साथ डॉक्टर के पास भेज दिया, तो भी पता चला ऐसा ऐसा है करके। वो तो हमें हाँ। पता ही नहीं था। हम हमारे तो दिमाग में भी नहीं था। हम तो हमारा सब काम ठीक ठाक से कर रहे थे, सब ठीक ठाक चल रहा था। फातिमा ये जी, ये अचानक से ये सब आ गया एकदम हमारे सामने, तो हमें तभी कुछ सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं। और बाद में भी डॉक्टर ने भी हाथ झटक लिए, बोल लिया हम कुछ नहीं कर सकते अभी इसको, तो या तो गिरा दो। बच्चा गिराना तो ये तो हमारे लिए सोच भी नहीं सकते हम। ये तो बात ही नहीं है। मतलब ये तो हम ये हमारे लिए सोचना भी बहुत बड़ी ये है, गुनाह है हमारे लिए। फातिमा जी, आपकी जो बात है वो समझ में बिल्कुल आ रही है हमें। आपकी जिंदगी काफी हम्म। बहुत डिफिकल्ट है। बच्चे देख रहे हैं, आप घर संभाल रहे हैं, आप आपका काम कर रहे हैं, आपका दिन भर से काम चल रहा है। लेकिन एक हमें ये मैडम के बारे में जरा बताइए, नहीं कौन मैडम है, और ये जो उन्होंने आपको सलाह दी थी उसके बारे में थोड़ा और बताइए। ये आती है हमारे यहाँ पे मैडम, लोगों को कुछ ना कुछ बताती रहती है, कुछ मदद करती है। वकील साहिबा है, वो वहाँ पे आती है, हमारे बस्ती में आती है। हर शनिवार को आती है, कुछ ना कुछ ये चलता रहता है। तो आई थी तभी ऐसे ही हमारी बात किसी उनके कान पे चली गई कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है करके। तो हमारे से बात कर रही थी, तो अभी तभी उन्होंने हमको बताया कि ये ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे मिल सकता है। तो हमारे लिए तो देखिए जो भी मदद होगी हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। और ये जो अगर मिल रही है मदद तो हमको चाहिए। और ये है हमारे वकील साहिबा, उन्होंने भी तो हमको बहुत मदद किया है। उन्होंने बोला है कि सब सब हो सकता है, सब मिल जाएगा हमको, पूरा पूरा भुगतान मिल जाएगा। तो हमको तो चाहिए अभी।
तो अगर मैं ये बराबर समझ रही हूँ, जब तक आप ये मैडम से और आपके वकील से नहीं मिले, आप आपके परिवार के लिए और आपका जो काम चल रहा था वो सब सही से चल रहा था, और आप डॉक्टर शिखा से खुश भी थे जो ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि ये जो मैडम और ये जो आपके साथ जो यादव जी हैं, वो जब मिले थे सर शिखा डॉक्टर से, तो भीड़ बहुत थी, यानी उनके पेशेंट भी बहुत रहेंगे। तो आपने क्या बताया उनको, क्या समझाया था? आपके जरा भाषा में समझा देंगे हमें? आप क्लिनिक में जब मिले थे उनको नोटिस के पहले, तो क्या समझाया था आपने, यही क्या बात बताया? बोलने गए थे, ये बात बोलने गए थे कि भाई ये सब चीज हुई है, उसके लिए उनकी जिम्मेदारी है, तो हमको उनकी तरफ से कुछ भुगतान चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने नहीं, मना कर दिया, उन्होंने बोला नहीं हो सकता है, ये ऐसे नहीं हो सकता है, ये गलत बात है ना। अभी ऐसे कैसे हम, अब अगर उनकी जिम्मेदारी है तो उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। इतने बड़े अभी ये दवाखाने खोल के रखे हैं, तो कुछ गलती होती है तो गलती का भुगतान भी तो उनको करना पड़ेगा ना। हमारे जैसे गरीब लोग जाएंगे कहाँ पे फिर? समझे, आपके 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 आपका जो कंडीशन है, प्रॉब्लम है, वो पूरे हमारे ये दिमाग में आ गया है, लेकिन और थोड़ा हमें पूछना है। लेकिन आपने जब उन्होंने बताया कि गलती हुई है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, क्या समझाया? वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उनसे गलती हुई है। ये तो गलत गलत बात हुई ना, हम और कहाँ जाएंगे? ये और उनको तो बिल्कुल लग रहा है कि नहीं, सब कुछ हमने ठीक ठाक किया था, ये आप ही के साथ। अरे आप ही के साथ कैसे, हमारे साथ ही कैसे? ये चीज तो हमें समझ में नहीं आ रही, क्यों हमारे साथ ही क्यों हुआ? वो, लेकिन कुछ उन्होंने बताया उसके बारे में कि कैसे हुआ है, क्योंकि वो तो मेडिकल के डॉक्टर हैं। उन्होंने कुछ आपको कुछ देखिए, इससे मैंने डिटेल आपको में? पहले भी बोला, आपके जो भी डॉक्टर की भाषा में जो भी बोलते हैं हमें कुछ समझ में नहीं आता, बताते हैं, हमारी दिमाग में ये चीजें नहीं आती है। आपके लॉयर थे साथ में आपके तभी, यादव जी थे? हाँ जी, थे, हाँ, बिल्कुल तो थे। उन्होंने कुछ बताया था कि उनसे कुछ समझाया था मैडम ने, शिखा मैडम ने, जो हमें आप थोड़ा सा अंदाज दे सकते हैं कि आपको उस सेशन में क्या पता चला नोटिस के पहले? Can I come in here, Preeti? यस सर। See, the questioning skills have to be with a particular direction. I told you, if you get involved into the contents, you will tie yourself up in knots. Now, where she was saying that, doctor is a good doctor, now she started now parrot-like saying she is negligent, she's negligent, she's negligent. ओके। The whole shift has taken place. So we have to be very careful while putting our questions that we need to shift parties towards resolution. Because court annexed or this mediation that we are talking about again is solution oriented. This is not about transformation, right? So therefore, once we are solution oriented, I need to understand she keeps telling you she is not the person who understands anything. She is illiterate. उसको कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्या language है. मुझे तो सिर्फ compensation चाहिए. राइट। So where is she coming from? Not that she is here to punish the doctor, but she feels कि अगर मैं ये करूंगी, मुझे ये advice मिली है, मुझे पैसा मिलेगा. राइट। मुझे पैसा चाहिए. Yeah. That's her interest. The interest is not to punish the doctor. But आपकी जो questioning lining now is going towards putting her on the attack. Now she goes on attacking the doctor. First she started with saying good doctor, कोई मुझे problem नहीं है, but ये हो गया तो मुझे इसकी परवरिश के लिए पैसे चाहिए. Now she's attacking the doctor on the basis of whatever is the advice that she's received. She's negligent, she must compensate me, she must give me money. So therefore, it's your questioning skills which need to keep you away from the blame. You must be able to shift her, and then this private session is going too long. Okay. One, we are not reaching anywhere because there is no direction to this questioning skills. And I just wanted to know. No, I just wanted to know whether she was explained something by her or not. That's all. She is illiterate. That's where the lawyer comes in. That's where now, you should ask the lawyer कि आपने भी
जो वो कह रही हैं एडवाइस मिला है, आपने भी देखा होगा, आपको कितना लगता है समय कि कितना इसको प्रूव करने में कितना वक्त लगेगा, बट देन अगेन ऑल दैट विल कम अ लिटिल लेटर. Right now, this private session is only for purpose of gathering information. You're still at that stage. अभी तक आपने issues नहीं, एजेंडा सेट नहीं किया, issues क्या है वो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ अभी तक. Okay, sir. This is, remember, the stage is gathering information stage. Okay. Sir, here, Your question should be to gather information. That's it. And when you find that the information, you're not gathering any information, it's better to shift to the other side, because they also would be expecting a private session. Okay, sir. Sir, I want to ask one thing. Now, if the lawyer behaved the way I spoke, कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, and I tried to inflame that situation, should that lawyer be told कि आप मुद्दे की बात करिए और मतलब No way, no way, no way, no way. You can't stop the lawyer. but then Lawyer very के साथ, easily then tell the after lawyer to tell. party के सामने में lawyer is a hero. Then when she sits with you later on, when we get into the option stage and alternative stage, that stage we break into a private session with a lawyer. Because reality testing cannot be when the party is there, because then the lawyer will look like a fool before the party. So then you get into the lawyer and with the private session and ask the lawyer, वकील साहब मुझे help me understand. आपको कब क्या लगता है हर केस में, like you know, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, this is the, आपने भी देखी होगी, आप कल इस मैटर को कोर्ट में लेके जाओगे, आपको क्या लगता है कि like you know, every case would be a case of negligence. जब अगर मेडिकल ये वो कहती है कि जी कि किसी केस में इन स्पाइट ऑफ ऑल प्रिकॉशंस ये हो सकता है, आपको लगता है कि लाइक पहली बात कि आप 100% जीतोगे, कब जीतोगे, दैट वाटना, एवरीथिंग विल ट्राई विद द लॉयर, रियलिटी टेस्टिंग एट दैट स्टेज. बट अभी वो स्टेज नहीं है. राइट नाउ योर प्राइवेट सेशन इज ओनली फॉर पर्पसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन. And our questioning skill, now look at Sonu, when you say, why did you not go for the 4 months? This is a threatening question. This is a cross-examination. आप क्यों नहीं गई? ये चीजें हमने avoid करनी है, because they are not leading us anywhere. And if you had asked now what is important to you, she would have said मुझे पैसा चाहिए. I mean, she's been repeating time and again. तो मुझे तो सिर्फ पैसा चाहिए. Now that's the issue which we need to work on. कि इनको कैसे पैसा दिलाया जा सकता है? Not necessarily by proving the doctor wrong. She can still get money without there being any negligence being charge being framed on the doctor. How do we get her money? That's what the basic the entire thing is moving around that. So pehle gather facts, but your private session should not be too long. The other side will start feeling kya ho raha hai. When you get into, after you have put them back together and set the issues and the agenda, then that private session is for you to for options and alternatives. Then you get into that. They are already उस समय आपकी questioning will be totally different. यहाँ तो सिर्फ gathering information, clarify the funnel approach. Here all that you need to do is the what, why are we here? आपने शुरू किया, बहुत अच्छा. Now a lot of information will keep flying. Now narrow it down by clarifying question where you feel is aapne very well you put it to us. So now you know there is a legal advice coming from some NGO, somebody has advised her, and that's why that she is now moved into this. So you have that now into your background. She did not do it on her own, because she started with saying doctor is a good doctor. Real dispute at the end of the day, the issue would be, how do मेरे को सिर्फ परवरिश के लिए पैसे चाहिए. All this about negligence, everything will disappear slowly. But question is, we should not permit it to be inflamed. आपके questioning was inflaming her. जहां पे वो कह रही थी अच्छे हैं, उसने बाद में negligent रट शुरू कर दिया. She was negligent, she must pay. She was negligent, she must pay. He kept coming back to that. इसलिए आपकी questioning skills बहुत important है. Gadda, any comments? No, I just wanted to confirm that the other party is already complaining about being left alone, and now you can tell them, look, I have heard you, like this is what your position is. एक बार and summarize करना बहुत जरूरी है. That's part of your active listening. How does the party know that you've understood? And most important thing in communication is understanding the other person's point of view.
Once you understand their point of view, they are satisfied. Okay. Summarize every stage. When you feel that you got some information and there is some tidbit which you feel is important, summarize. Now you can summarize and tell them, okay, look, I'll come back to you again. Let me just go back to the other side. मुझे जरा उनसे मैं बात करूं, and I'll come back to you. And now when you question doctor, very carefully now you have to follow the funnel approach. Suni, you want to summarize? Yeah, please, any one of you summarize and then, but that's a practice you must do. तो फातिमा जी, आपसे बात करके हमको पता चला कि आप सोनू, जो हमें समझ आया, हमको this is समझ what आया। we understood. पता चला Okay. is different than हमें ये समझ में आई बात. अच्छा, Help me understand. I keep telling you that question. Help me हाँ understand. हाँ, हमको समझ आया कि आपकी आप आपको मिलने को कोई एक लेडीज आए थे ये वकील जी के साथ, जिन्होंने आपको बोला कि ऐसा हुआ है तो आप डॉक्टर के पास जाके पैसा मांग सकते हैं, और आपके पास 2 बच्चे हैं और तीसरे बच्चे को की परवरिश आपको बहुत डिफिकल्ट हो रही है, तो आप उनसे इसीलिए उनके पास से आप पैसे की मांग कर रहे हैं। ठीक है, ये जो हम बोल रहे हैं वो। Can I make an attempt at हाँ। summarizing what was said? Please go ahead. हाँ। Go ahead. फातिमा जी, हमको ये बात समझ में आई है कि आप यहाँ पे आपको यहाँ पे ये एनजीओ वाली मैडम और ये वकील साहब लेके आई है ताकि आपको इस बच्चे की परवरिश के लिए पैसा मिल सके। ओके, ये ठीक है, ये ठीक है। हाँ, ठीक है, तो अभी हम डॉक्टर शिखा जी के साथ भी एक प्राइवेट सेशन कर लेते हैं। ठीक है, आप थोड़ा टाइम बाहर रुक सकती है। और चाय पीजिए, आप कॉफी चाय पीजिए। हाँ। Have tea and आपको coffee. बच्चे को देखना है तो बच्चे को देख सकती हैं। हाँ, Yeah. बच्चे को भी देख लो। ठीक है। थैंक यू। Dr. Shikha is back. Yes. Yes. Yeah. Dr. Shikha, thank you for waiting so patiently. We would like to know a little more about what went on to help understand the situation better. Are we in private or are we? We are Yeah, in private. private, yes. Right. Yeah. You gave too much time to the complaint. Yes. We went really too deep. Okay. Okay. See, basically, I have, as I said, I've been practicing for last 20 years, and I have developed this kind of rapport with all my patients. They keep on coming from time to me. So when something like this strikes, it's very difficult to digest that somebody you have been taking care for so many years, two deliveries, and even after that, it's something that you just can't accept because there is no peace of mind. You know that you have not done anything wrong. See, when you do something wrong and you start feeling bad about it, it's still understandable. Here, we've done everything right. We've done as much as we can for this patient, me and my whole team. But this comes as a lightning which is striking me, and I don't know how to respond. I mean, like, I know this person for so many years, and suddenly I feel I don't know this person because maybe it's an instigation of someone or maybe her financial condition. I don't know what is the reason. But I need peace of mind because I don't want my other patients to be getting affected by that. Right. My practice is also going to be affected if I keep concentrating on this. I need an end to it. Like the reason I have come to mediation is I was told that we can make a solution and agreement on how to take this forward or how to end this dispute.
Because I know that if it goes to court, it's going to go for years together and there's no end to it. But True. 25 lakhs, you think I have not done a mistake? I know I have the legal advice with me. I have seen the Supreme Court judgment. It has been widely discussed. And I know all these points are in my favor. Uh, almost I have a professional indemnity policy which covers me almost for 1 crore. I've never had the opportunity, thankfully, touch wood, to inform the insurance company about, covering me. But I've been taking this policy from year to year, not because I want to see an aggrieved patient, but if it rains, I should have an umbrella ready. So that was the reason I took this policy. I can take a stand, saying that the insurance companies told me we'll go up to the Supreme Court. We are not going to have a amicable settlement. So they have this tough stand, but I'm not the person who will think that if law is on my side, I don't care a damn about the feelings of my patient, because that's more important for me. She also has been a good patient. I mean, it's not that she's been a very irritable person or a difficult patient to deal with. She has been a very, very good patient. She used to follow instructions and all. Now she says suddenly, I explained to her in so much of detail, because I understand the level of understanding is different from what other patients understand, educated patients understand. But I don't want her to carry the feeling. If she's asking for a very unreasonable amount when I have not done anything wrong. And it's not based on my perception alone. I have spoken to a lot of my gynec colleagues, and they have said that this is not a fit case where you should even think of a settlement. And I've come for this settlement not for uh, anything else or to cover up my wrongdoing. It is because both me and she should be at peace of mind, and we should get back to our work. She also is a domestic worker and she cannot keep coming here. She obviously cannot even spend on mediation, because the expenses of mediation, though your fees are very reasonable, I thank you for that. But still, it's an expense for her and me, and the timing also. So I'm ready to think about solutions at this stage. I didn't want to say there because her Right. lawyer is, very, very aggressive personality. Hmm. I don't want her to pick that up and say कि हाँ ये solution के लिए तैयार है, so now let's raise the amount and all that. This is what I've heard other colleagues facing this kind of a problem. So Mm. I can do something bit for her. In the past, her children, I have this practice of taking care of education of some poor or underprivileged children. And I have done that for her 2 other children. She never spoke about it, never Oh. even mentioned it. So I have taken care of that. I'm not taking credit for that, but the purpose is that it's my practice to, do something or give back to the society in some manner. So giving back to the society and, taking care of the fees of the school fees when she goes to school, or maybe even she will have to undergo the sterilization procedure once again. So we can do that free of cost. Even municipal hospitals do that free of cost. In fact, they get some amount for undergoing that procedure. She can explore that. I can give her guidance on that. Plus, I can even say that BMC has a policy where if there's a failed sterilization, there's an insurance policy and they get 30,000 as a compensation. I can facilitate that for her. But giving a compensation to the tune of 25 lakhs will be a admission of guilt, which I won't be able to even live with that. So these are a few things that have come to my mind. I would be too happy that if we get a early resolution, because my purpose is not to, prolong this. I want this to be
win-win situation or good for both the parties. But I don't want her to get the message that I'm wrong. That is why something is being done for her. The other thing they mentioned was that before they filed the complaint, they had come and met you and they told you about it, that they're going to file the complaint. And apparently they thought that you were a bit terse with them. So that's also, like a point of contention, So No, maybe that kind of aggravated the whole thing, or they found you a I bit rude, or something like that they did mention. okay. Dr. Shikha, from what we could understand from what you just said, is that you have a lot of experience behind you and you have you value your doctor-patient relationship a lot. And despite having a protective cover of your insurance and knowing that you haven't done any wrongdoing, you don't want your patient to go through a court proceeding and you to go to a court proceeding, so you're ready to go for the mediation. We really appreciate that, and we would like to present a few facts of what you have said in the joint session to see how we can Right. take the matter forward. Preeti, that was very complimentary. When Sonu went into again a negative aspect of what the other side said, you summarized to highlight the good things that he said. That's the way, mediators, co-mediation works. You took over and therefore I keep telling you, see 6, 7 and 1, please make notes. I've written down all the 6, 7 things that he said. They are very, very good to repeat back when you summarize. As we understand, you need a quick resolution of this. You need peace of mind. You have, as you rightly said, you have a professional cover. You feel for the patients. You feel that she's been a good patient. You feel this is an unreasonable amount. So therefore, like he's giving you a hint, maybe like something can be worked out. Right. You talked about, taking care of the children, education of the children. Here also, you are not averse to getting her some money through the other policy that you just now talked about. Yeah. But any amount, if it is paid in the manner that she's been demanding, you would not be very, comfortable, because that will amount to admission of guilt when you feel that, medically, as per the medical professional ethics or as per the medical science, this is something which is possible in spite of when, you take the entire care. All this you should have, and then if required, then Sonu's question, help us also understand. She said that, before actually she was, decided to take any action, she did come to consult you, and she felt that, you're very rude or terse, you're not able to take her call. Then that question, the effect of the entire question will be softened. Summarizing, keep that as a mantra. And anything good that you hear, they would like to hear this. See, sometimes we say things, but we don't actually listen to ourselves. So if you summarize it, he also gets to listen to that, and he'll feel good about it. So you took over very well, and that's that summary. We mentioned those points that he says that he's ready to do this, he's ready to do that. Okay. I thought that will come out later. Take note. No. Just for right now. Therefore, you need not take too much of time now. Now you have 2 things. See, beautifully, you've taken out in the entire first joint session and the private session. You now took out the real points in issue. You now can see some points of options emerging on the table. Right. Correct? Now, this is the time for you to move on. Identify the issues when have both the parties there and say, look, we'll now try to work on what options, what are the ways we can find solutions. I'd like to now get into a private session again. Because you generate options, optimally in a private session, because parties don't want to talk about what they want to give in a joint session, because that's we told you one of the barriers, psychological barriers coming from the other side means if he says 30,000, that means he has the means to pay more. Right. So now we go to another private session with No,
Now you get them Joint both. session. And now after having like what I said, please make your notes, because even when you're doing a role play, keep making small notes, because you can't remember everything. Right. Short notes are a must. Not that you keep your head down and keep writing notes, because the eye contact should not be lost. But make short notes, just make points. And then you can summarize it to him. And after that, have a joint session. Now tell both the parties, now how we have understood. These are the things that we need to talk about. Have I understood it correctly? Frame them neutrally. But in the joint session, should we mention what Dr. Shikha said No, to the other party? only No? now in the context. See, content, all this which has been said to you is for your consumption. Context is she needs money, and here is a person who wants to help her to get that money without any admission of guilt. So now how she can get money, you see, that's where when you sit with her privately, now you can now you can sit even with the lawyer at the party privately. You can have now a private session. फातिमा जी, आप क्या चाहती हैं? आप चाहती हैं कि जी डॉक्टर साहब को पनिशमेंट मिले जो उन्होंने किया है, या आपको पैसा आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो कहिए हमारे को जी डॉक्टर साहब से हमें उनसे तो है ना कराना, हमें तो पैसा चाहिए. So do we ask why they came up with a figure like that, 25 lakhs, or is Exactly, it help me understand कि ये जो 25 लाख आपने बहुत सोच समझ के ये फिगर रखी होगी, ये इसका कोई बैक बताएंगे, हमें समझाएंगी, दैट हम जब दूसरी साइड के पास जाएंगे उनको हम समझा सके. She will have no answer for this 25 lakhs. So this is But if without the all lawyer. this is, all this is in the private session, then what is the purpose of having a joint session just now? Now, because how do we know what are we going to talk about now in future? How do we move the session? They must know what are we going to talk about, not about negligence. We are going to talk about money. This is what you want, and this is where Dr. Saab is willing to help. Now, how do we do that? Let's work it out. Because it has shifted now. The entire focus is not on punishing Dr. Shikha. Yeah. But getting my money, because now I have no money. I am poor. I want to now I have to take care of this child. How do I take care of this child? So I want help. This is what she's telling you in a nutshell. All that has come, legal notice, all that has come. You see, what has hurt Dr. Shikha is all that has come because of that NGO lady. Okay. So all that you'll use in private session to assuage Dr. Shikha's feeling, saying that, it's not that she's come on her own or she wants you to be punished. All that she's looking at is only this. And you've been very gracious. You've been very, you always helped. Up now, when you have a private session about the education of the children, you can keep reminding that lady all that. He's been doing that to you. He's been, this is that atmosphere. You are creating a safe atmosphere where parties trust you and open up. And once they open up, they'll tell you their real interest. And once those interests are on the table, the underlying interests are on the table, you'll find solutions much easy. They will be coming very, very easy for you. Because they will give you solutions. You don't have to do anything. कितना चाहिए? अच्छा, जब 25 लाख आपने क्या सोच के किया था, आपको एक्चुअली कितना चाहिए? मेरी बेटी की एजुकेशन होनी चाहिए, कितना खर्चा होता है? Then start going into that rupee paisa. And these all figures will come down. I'd like to add something. Yes, Gandha. Also, while exploring with the lawyer, there was a lot of this thing about how, how they can go to court and get money and all of that. Little bit exploring with the lawyer and trying to understand from them whether they really know the legal position and what is the process once you go to court. So it's like a reality check, and whether they have informed their client, ask like a conversation. So what do you think is the next step if you want to go to court? That way, because right now they're very strong on that defensive stand that there is a big case that they can file in the court. Can Fatima really afford it?
What is it going to cost her? All of those questions are things that you have to ask, so that that's like a way for them to realize, okay, is it really a practical? So you're analyzing their BATNA. So basically what they're telling you is their BATNA, but you are answering with reality checking of the BATNA itself. Nanda, this when she was saying, Deepa, and they were saying that the NGO is going to give the money for the Yeah. for Money is fighting. one part of it. Huh. Huh. No, and And again, NGO will also take a percentage of whatever Yeah. you get. yes, Right. NGO They're will not going take to give up you free. They're not doing you any free help. Correct. No, but then as a victim, she feels that she's not paying anything and she's still getting the whole amount at the end. So yes. do we So that is the put that seed? perspective she's Huh. coming with. Right. You need to question in such a way, because we all know how the court systems work. How long is Yeah. it going to take? How Right. are you going to? I mean, it's just not the fact that there's a case going on. You have to go there and wait for hours. Right. And is it the NGO? If the NGO was supposed to pay for it, why didn't the NGO come for the mediation? You Hmm. have got another lawyer. Remember those questions of BATNA? Remember I said how long it will keep you away from your place of work? Yeah. You know, how much time you are spending away from place of, obviously if she works, she'll get money. She has to take care Hmm. of other 2 children also. NGO is not going to pay them for, I mean, she may do the litigation. But what about the time spent in court? What about the time spent with the lawyers? Will she get so much, chutti from her work where she is working? So the next private session we should have without the lawyer then. Both, you can try. You see, therefore, you can have, as Ganda says, reality testing with the lawyer separately. Hmm. You can have in reality testing with the party separately to understand whether they, as she says, they really understand. That is empowerment. Do you really understand what you're walking in for in case if you don't settle? And what is on the table? Dr. Saab says, like, he'll help you get 30,000. He'll help you with the education with the children. Will that, help? What else are you looking for? Because their thinking is not 25 lakhs. I mean, a lady who's working, doing house chores, she doesn't understand what does this 25 lakhs mean. That's a figure because he said, there's a judgment which will get you 20 lakhs, 25 lakhs. So for her real needs are education, food, clothing. That's all. How much will that work out to ask her? If that need is met, do you think it will be satisfied? You will be satisfied with it? And somewhere around the figure, minimal amount pe ye matter khatam ho sakta hai. But you have to reach there. Let the parties spell out. That's what I'm saying. All that you're doing is your questioning skills. You're not venturing. You're not saying 10,000 le lo. You're not saying 15,000 le lo. Nothing. Let her come out with her figures. And see what comes out. First now, a joint session. Get them back. Set the issues. What are the issues that you'll work on and the agenda. And then get into tell them we would now like to get into a private session to explore how we can find solution to the whole thing. Options are points of agreement, where we can now reach at the points of agreement. Yes, Dr. Subodh, yes, you want to say something? No. No, I don't have to Okay. say. So should we bring them in? You want to take it, Sumit? Summarize it. No. Summarize what you have done so far and then Yeah. set the agenda. फातिमा जी और डॉक्टर शिखा प्राइवेट सेशन दोनों के साथ एक बार हुआ है और हमें काफी मालूमात काफी जानकारी मिली है आपके प्रॉब्लम के बारे में। अभी फातिमा जी, अगर मैं बराबर समझ गई हूँ, आपका मुद्दा ये है कि आप डॉक्टर शिखा के ट्रीटमेंट से खुश हैं और उन्होंने आपकी अच्छी देखभाल की है इतने साल। आपके 2 बच्चे, पहली डिलीवरी उनके साथ हुई है, ऑपरेशन जैसे उन्होंने सलाह की वो आपने की है,
उसके बाद की थर्ड बच्चे की डिलीवरी भी डॉक्टर शिखा के पास आपने की है, लेकिन अभी आपको डर है कि आपके बच्चों की परवरिश और आपके बच्चों की देखभाल आगे चल के कैसे ठीक होगी और कैसे अच्छी होगी, उसके बारे में आपको बहुत चिंता है, क्योंकि आपका जो काम है उसके हिसाब से आपको कितना वक्त और कितना पैसा आप उनकी परवरिश में लगा पाएंगे, उसमें आप पे आपका ज्यादा how do I word it? You're very worried about it. Okay. Okay. Am I right, Fatima ji? हाँ जी बिल्कुल। Okay. And Dr. Shikha, from what I could understand, you are very experienced and you are very caring for your patients, and you value their rapport. You take care of them as you take care of your own family, and you have been taking care of Fatima ji and her family for a long time. And you also do understand that she's come from a background where she is trying her best with her daily duty to take care of her children, and you are also willing to sit through this procedure so that you can help her out and achieve a solution so that both of you can resolve this quickly. Am I right? That's true. But I would not admit guilt. Yeah. I'm very clear on that. ये So- अंग्रेजी में बात नहीं करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। Sorry, I didn't hear that. अंग्रेजी में बात नहीं करोगे तो बहुत बेहतर होगा। You'll be sitting here the entire night then. I don't know, I'm supposed to play that. I'm sorry. हमारा इतना ही कहना है यादव जी कि हम सॉल्यूशन के लिए तैयार हैं, बट हम ये नहीं मानते हैं कि हमसे कोई गलत काम हुआ है जिसकी वजह से ये प्रेगनेंसी हुई है। हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि इसका लीगल पोजीशन और मेडिकल पोजीशन क्या है, तो यही हम समझाना चाहते हैं। Okay, so Dr. Shikha wants to help, and Fatima ji, आपको जो मदद चाहिए, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, वो कैसे हम लोग अच्छी तरह से फुलफिल करेंगे, उसकी जिम्मेदारी डॉक्टर, आपकी जिम्मेदारी और आपकी जो परिस्थिति है वो डॉक्टर शिखा को भी मालूम है। एंड ये सुलझाने के लिए हमें आज ये पॉइंट पे आना है कि इस सेशन अभी हम लोग वापस एक प्राइवेट सेशन लेंगे आपके साथ और फिर डॉक्टर शिखा के साथ, और आपके जो मेन agreement, sorry, how do I word it? Yes, Sunu, that we need to reach a point where she's happy with the settlement, or reach a point of settlement. तो जो भी ऑप्शंस डॉक्टर शिखा ने बताए हैं वो हम प्राइवेट सेशन में डिस्कस करते हैं, और आप सुन लीजिए वो सब, और हम उसके बारे में चर्चा करेंगे प्राइवेट सेशन में। जी, तो हम आपको ये पूछना चाहते हैं कि शिखा जी ने हमारे लिए क्या बात की है। हमने तो हमारी प्रॉब्लम बता दी, आपने शिखा जी से उनकी प्रॉब्लम तो सुन ली है। हाँ। वो हमारे समझ में नहीं आई है। वो अच्छे डॉक्टर हैं, हमारी क्लाइंट तो मानती हैं कि वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो हाँ। भगवान की जगह भी दे चुकी है, लेकिन अभी हाँ। कैसे है कि अभी जो भी हुआ है वो फेल्यूर तो हुआ है ना। हाँ, तो उसके बारे में, वह तो उसी के बारे में उन्होंने थोड़े ऑप्शंस हमें दिए हैं, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं प्राइवेट सेशन में। तो आप आ सबके सामने जाइए करिए ना, प्राइवेट उसमें से। प्राइवेट का है, सबके सामने करिए ना, प्राइवेट का है। ये बहुत चीजें हैं यादव जी जो हमें आपसे भी पूछना है और आपके फातिमा जी से भी पूछना है, जिससे ये जो लंबा आपका कोर्ट का प्रोसीडिंग चलेगा वो उसके लिए तैयार है कि नहीं, उनको आप जो सलाह दे रहे तैयार हैं है। उससे ठीक प्रीति, है। प्रीति, यस सर। यहाँ पे यू हैव टू जस्ट सिंपली से पॉजिटिव। डॉक्टर साहब भी बहुत पॉजिटिव है, वो आपकी मदद करना चाहते हैं। ओके 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 एंड जो भी उन्होंने बातें की हैं वो आपके मदद के लिए की हैं। ओके, Because the moment we talk about Vatna and court कचहरी में क्या होगा and all that, they'll that will shut off. Yeah. that will inflame the lawyer. Yeah, I got it. Got a But brain freeze. what if she's insisting I don't want to do private and talk here only in joint Just session? tell them कुछ बातें ऐसी हैं जो अच्छा। जो वो भी नहीं करना चाहते आपके। देखिए वो क्या, देखिए कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस है,
और कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो हम अब एक दूसरे के सामने इस समय खुल कर नहीं करना चाहते हैं। निकल के आएंगी, सारी बातें खुल के आएंगी, हाँ। बट वो वक्त नहीं है। देखिए, हमने अच्छा। कहा था ना कि आप जो है आउटकम आप कंट्रोल करेंगे, बट जो प्रोसेस है, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग है, हम चलाएंगे। तो हाँ। यहाँ पे हम चाहेंगे कि हम लोग इस समय प्राइवेट सेशन करना चाहते हैं, तो यू हाँ। कैन ऑल्सो टेक दैट चार्ज ऑफ दैट, सी, बिकॉज यू आर इन चार्ज ऑफ द प्रोसेस, या। is in their hands, so you can say हम भी चाहते हैं इस समय, लाइक हमारे हिसाब से भी एक हाँ। होना चाहिए प्राइवेट सेशन बिफोर we'll हाँ। again come back, we'll come back into a joint session. Sir, but will that not make the whole process opaque and will lose the transparency No, at this point if you ask for a private session without actually taking some points? And see even what the is party Deepa, can say, कि even we want to know why they Yeah. came up with this it 25 is lakh rupees. Deepa, the important thing is somewhere down the line as mediators you have to assert your position Okay. that we are the ones who control the process, हम आपके भले के लिए कर रहे हैं, हमें पता है कि जी हम जो कर रहे हैं, देखिए आपको हमने कहा ना आउटकम आपके हाथ में, इसको कैसे चलाना है वो देखिए हमारी ट्रेनिंग है, इतने केसेस यहाँ पे ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं। आप बिल्कुल घबराइए मत, इसमें जो भी बात होगी आपके सामने खुल के होगी, बट वो अभी स्टेज नहीं आई है। हम करेंगे, खुल के बात जरूर करेंगे, सो दैट आपको ये ऑपेसिटी नहीं लगे। यू द अश्योरेंस मस्ट कम फ्रॉम द मीडिएटर्स कि जी कि हम खुल के बात करेंगे, एक दूसरे के सामने बैठ के बात करेंगे, बट इस समय वो बात हम नहीं कर सकते। वो कुछ बातें हमने आपसे भी पूछनी है, कुछ बातें उनसे भी पूछनी है, उसके बाद हम इकट्ठा मिलकर तो आपको एक दूसरे के बारे में जो ऑप्शन जनरेट होंगी उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। बट आई मस्ट असर्ट टू द एक्सटेंट दैट आई कंट्रोल द प्रोसेस। लॉयर लाइक यू कैन बी समटाइम्स इरिटेटेड कि जी क्या बार बार आप प्राइवेट सेशन में जा रहे हो कि हमारे को पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। देन टेल देम, देखिए आपको कहा था ना कि जी आउटकम आपके हाथ में है, बट क्योंकि हमारी ट्रेनिंग है, हमने बहुत सारे मैटर्स यहाँ पे रिजॉल्व हुए हैं आप हमारी मदद से, पार्टीज के साथ हमने बैठ के रिजॉल्व किए, तो यू आर इन सेफ हैंड्स, डोंट वरी अबाउट इट। लाइक दिस इज द काइंड ऑफ थिंग दैट यू हैव टू कीप टेलिंग द लॉयर इन द पार्टी, यू आर इन सेफ हैंड्स, वी आर ट्रेन्ड मीडिएटर्स, डोंट वरी अबाउट इट। जब वो वक्त आएगा हम खुल के बात करेंगे, बिल्कुल आपकी बात कराएंगे, खुल के बात कराएंगे। Okay. But somewhere you will have to assert that you are the one who is in charge of the process. Don't let the parties and the lawyers dominate you, because then you will never be able to control the process later. Okay. Get your point, sir. But be soft, be soft. You don't have to be rude. Be soft, but still firm. Okay. So Go we'll ahead. have the private session now. Yeah. Now you decide whoever you want to sit with. Now you take the decision. तो फातिमा जी आपके साथ प्राइवेट सेशन करेंगे, आप आएंगे? हाँ जी, हम भी आना चाहेंगे। हाँ जी, बिल्कुल हमारे वकील रहेंगे हमारे साथ। ठीक है। फातिमा जी, फातिमा जी, क्या मैं ये समझ सकती हूँ आपसे कि आप आपके तीनों बच्चों के एजुकेशन या पढ़ाई के लिए क्या कर रहे हैं अभी? कौन से स्कूल में है और क्या उनकी फीस वगैरह आप खुद ही भर रहे हैं? देखिए अभी 2 बच्चे तो एकदम छोटे ही है, वो तो स्कूल जाते नहीं है। बड़ा वाला स्कूल जा रहा है, म्युनिसिपल स्कूल में जाता है जहाँ पे फीस तो कुछ होती नहीं है। तो पर अभी जैसे हमें बताया गया कि 2 बच्चों के आगे फिर तीसरे बच्चों की फी तो हमको भरनी पड़ेगी, आगे जाके हमको फी भरनी पड़ेगी, बच्चों का खाना पीना है, ये सब चीजें तो है ही। इस परवरिश में, इस एजुकेशन में आपको डॉक्टर शिखा ने मदद की है? अभी तक तो नहीं, कुछ नहीं करा है। This is a little off. Okay. We don't know who's lying. Okay. ये अंग्रेजी नहीं यूज करिए, हमारे क्लाइंट ना समझती नहीं है। क्या यादव हम तो समझ गए लेकिन हमारी फातिमा जी को नहीं समझ में आया है। यादव जी, हम जरा आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। आपने फातिमा जी से जो आपके नोटिस और आपके जो कोर्ट के प्रोसीजर है वो समझाया है? उनको समझ में आ गया है? समझाए तो है। हाँ, उनको समझ में आ गया है कि कैसे चलता है, कितनी बार
उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा, इनका अंदाजा है फातिमा जी को? फातिमा जी आपको वो जो आप बात हमें पूछ रही है ना, वो हमारा प्राइवेट है, उनके साथ में जो भी डिसाइड हुआ है वो हमें आपको बताने की हमें जरूरत नहीं लगती है। और वो हमारी क्लाइंट है, उनका इंटरेस्ट बेस्ड जो है ना वही हमको देखना है। बाकी तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारी क्लाइंट की आप मदद कर सकती हैं तो बोलिए। यादव जी लेकिन आपके हम जानना चाहते हैं कि उनको समझ में आया है कि नहीं, कि कोर्ट हमारे कचहरी क्लाइंट के है, मामले हमको में क्या इंटरेस्टेड होता है। है। देखो हमारे को भी एक कोड रहता है जिसको हमें जिसके लिए हमको भी जिम्मेदार पड़ा जाता है। हमारे क्लाइंट के बारे में सारी चीजें तो हम बताने वाले हैं नहीं। हमको सीक्रेसी का कोड है, हम सब चीजें डाइवर्ज नहीं कर सकते हैं, हमारा भी रिस्ट्रेंट है। आप भी या, हमारी बात समझिए। यादव जी, हम यहाँ पे आपकी मदद के लिए, आपके क्लाइंट की मदद के लिए ही हमारा हैं। बार काउंसिल का हमें कोड है ना, वो तो फाइनल है हमारे। बिल्कुल बिल्कुल हम आपकी बात बिल्कुल नहीं समझ गए हैं। हमें कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपसे, आपके लॉयर ना, क्लाइंट के रिलेशनशिप से नहीं नहीं उसमें बाधा नहीं लानी है। जो जो लेकिन जो भी बात आपको चाहिए ना, वो फातिमा जी से हमारी हो चुकी है। और हमारे बारे में और हमारे रिश्ते के बारे में जो भी बात करना चाहती है ना, आप वो फातिमा जी से पूछ लीजिए। जो वो ठीक, बोलेंगे वो सब सच है। बिल्कुल फातिमा जी। आप उसका अ, जवाब दीजिए। बिल्कुल, थैंक यू यादव जी। फातिमा जी, हाँ अ, जी। जैसे अभी हम यादव जी से बात कर रहे थे, आपको यही पूछना है कि ये जो कोर्ट का प्रोसीजर है या कोर्ट का जो सीन है, जो यादव जी ने आपको समझाया है, आपको समझ में आ गया है कि कैसे चलता है कोर्ट का प्रोसीडिंग वगैरह? कुछ कुछ चीजें समझिए, बताइए। उन्होंने बोला था जाना पड़ेगा हमको कभी कभी जज साहब से मिलने, दिखा उनके बुलाएंगे तभी जाना पड़ेगा। बाकी तो जो हमारे है वकील साहब, वो जो जैसे करेंगे हम वैसे करेंगे, बोलेंगे। आपको अंदाजा है कि एवरेज कितने महीने या साल साल ये प्रोसीडिंग्स चलता है? देखिए आपको अभी समझाया बोला है? बोला है हमको मिलेगा। अभी कितना भी, थोड़ा ज्यादा भी टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लग सकता है बोल रहे हैं, पर ज्यादा भी टाइम लगेगा तो भी अच्छा। अभी तो बच्चे छोटे हैं, थोड़ा बड़े होने तक हमें कुछ भी मिलेगा तो उनके बच्चों की पढ़ाई में हमें काम में आएगा पैसा। तो बिल्कुल, लेकिन आपका, हाँ वो बोलिए। अगर जो भी है 2-4 साल जो भी लगने हैं, हम तैयार है उसके लिए, हम कर लेंगे। कैसे भी बच्चों के लिए अगर करना पड़ेगा तो कर लेंगे। ये दो हाँ, चार दिक्कत तो है हमारे लिए, ऐसे नहीं है कि नहीं, ये हम खुशी खुशी करेंगे। पर अगर बच्चों के लिए कुछ करने की जरूरत है, ये काम भी बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो वैसे ही समझेंगे कि ये भी हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो ये भी टाइम उतना, ये अगर करने से इतना पैसा हमें मिलने वाला है तो वो दका देंगे वहां पे टाइम, यहाँ पे। फातिमा जी, आपने कुछ अंदाजा निकाला है कि आपको महीने में आपके बच्चों के लिए, आपके घर चलाने के लिए कितना पैसा लगता है अभी? देखिए ऐसा तो हमने कोई खर्चा निकाला नहीं है अभी, है खर्चा निकाल के करेंगे क्या? हमारे हाथ में जो पैसा आता है वो सबका सब तो खर्चा हो जाता है। बट दिन में कुछ महीने के आखिरी में कुछ बचता तो है नहीं, तो हम खर्चा कब सब पैसा निकाल के करेंगे क्या? लेकिन अभी आप जो बच्चों के स्कूल के बारे में बता रहे थे, उनके खाने पीने के बारे में, तो उसमें आपको आइडिया है कि स्कूल का खर्चा कितना आता है महीने का? अभी जितना हम कमा रहे हैं उसी में तो हमारा चलता नहीं है। हमें बहुत कभी कभी महीने के इस पे, जब भी एक ही बच्चा स्कूल में जा रहा है, दूसरा तो अभी 5 महीने का है, तीसरा 2 महीने का है, तीसरा 5 महीने का है। 8 अभी years, उस 6 years, 5 months? Anyway, what about Okay. those kids? Okay. No. तो uh, तो वही है कि इतने ही में अभी हमारा पैसा हमें नहीं पूरा पड़ रहा है, तो ये तो है कि आगे जाके और भी नहीं पूरा पड़ेगा। जो uh, अगर है हमें पैसे संक्षिप्त की में जरूरत बताना तो है होगा, नहीं। फातिमा जी, क्या हम बताएं आपकी प्रॉब्लम जो है? हाँ जी, बताइए जी। ये कैसा है कि वो पढ़े लिखे हैं नहीं, खर्चा बटोर नहीं सकते, उनके आदमी देखते हैं जो भी खर्चे हैं नहीं है। अभी आप गृहिणी को कुछ पूछेंगे कि कितना खर्चा कहाँ हो रहा है, राशन क्या आता है, कहाँ से आता है, थोड़े ये देखती हैं। वो तो उनका फातिमा आदमी देखेगा ना। फातिमा जी, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां से आपको बार बार छुट्टी मिलेगी? नहीं मिलेगी, वो तो सही बात है, हमें वो दिक्कत तो होती है। बट मैंने वैसे जैसे आपको बोला कि
अगर ये यहाँ से हमें पैसा मिलने वाला है, जैसे वो प्राची मैडम ने बोला कि ये करो तो पैसा मिल जाएगा, तो पैसा मिलने वाला है, तो हमारे लिए तो काम, देखिए काम पे भी जाएंगे तो भी पैसे के लिए जाएंगे, और यहाँ पे भी हम वक्त बिताएंगे वो भी हमें पैसे के लिए बिताना है। तो एक ही चीज हुई ना, एक ही बात हुई ना हमारे लिए। क्या आप हमारे लिए ये कर सकते हैं कि एक नेक्स्ट मीटिंग के पहले एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कितना खर्चा होता है, या तो महीने का है तो साल का, तो आपको भी अंदाजा आ जाएगा कि आपका कितना एक्चुअल खर्चा जा रहा है बच्चों पे। ये आप कैलकुलेट करके आपके लॉयर के साथ या आपके हस्बैंड के साथ बैठ के हमें एक फिगर दे दीजिए, तो हमें आइडिया तो आ जाएगा। और एक दूसरी ये चीज जो तो निकालना बड़ी मुश्किल बात है, अगर लॉयर साहिबा हमें कुछ मदद कर सकती है इसमें, हमें तो ये सब चीजें कुछ समझ में आती नहीं है। ओके, नहीं हम यहाँ पे इसीलिए बैठे हैं कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और हमारा ट्रेनिंग भी इसीलिए कर रहे हैं, तो हम पे थोड़ा विश्वास रखिए इस पे। और जो नोटिस दिए हमने हमने जो नोटिस दिए हैं उसमें हमने एक अमाउंट डिमांड की है, वो दिला दीजिए, हम खुश है। फिर ना हमको कोर्ट कचहरी में मतलब है ना और किसी चीज से मतलब है, पैसा तो दिला दीजिए आप। लेकिन आप किस हिसाब से 25 लाख का डिमांड कर रहे हैं वो हम जानना चाहते हैं। क्या कैलकुलेट करके आप ऐसा डिमांड कर रहे हैं? दे सकते हैं, हमने हमारे टाइम को दे दी। तो जी। क्लाइंट को हम बताना नहीं चाहते हैं, वो अमाउंट जो है वो कोर्ट ने पहले डिसाइड किया हुआ अमाउंट है, पहले का केस है एक। अगर आप ठीक से पढ़ लेंगी, एक जजमेंट है जिसमें ये सब कंपनसेशन ऐसे कैलकुलेट होके, और वो बच्चे को क्या है कि जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, कमाने लायक नहीं बन जाता, तब तक तो डॉक्टर ने उसका हिसाब करना चाहिए। एक कोर्ट केस है, ये हम दिखा चुके हैं, एक कोर्ट केस की कॉपी हमारे क्लाइंट के पास भी है, और उसी के विश्वास पे हमको लगता है हम केस जीत जाएंगे। यादव जी इस तो केस के रिक्वेस्ट लिए यादव जी इस केस के लिए कितना टाइम लगा था आपको, वो जरा हमें भी बता दीजिए। काफी लंबा समय लगा था। फातिमा जी, फातिमा जी आपने ये जो यादव जी ने बताया है उस पर गौर किए हैं ना आप? अभी ये आपको पूरा बताए तो है, पर आप क्या बात करना चाहते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये तो देखिए, हमें जरूरत है पैसे की, तो उसके लिए जितना भी टाइम लगेगा हम कर लेंगे, हमें मिल जाएगा पैसा तो अच्छा है हमारे लिए। फातिमा जी हमें ये समझ में आ गया है कि आपको परवरिश के लिए पैसा चाहिए, और उसी के लिए हम डॉक्टर शिखा से भी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एक अंदाज हमें आ गया कि आपको ये जरूरी है, तो हम दूसरे साइड से भी वैसे बात कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें समझना है कि आप ये 25 लाख किस हिसाब से आपने वो 25 लाख का फिगर लाया है, आपकी रिक्वायरमेंट एक्चुअली क्या है। तो वो अगर हमें समझ में आ गया तो हम दूसरे साइड से भी बात कर सकते हैं। ये तो देखिए, हमें हमारे वकील साहब ने और वो प्राची मैडम ने बताया कि ऐसे हमारी जैसे किसी के केस में 25 लाख कोर्ट ने दिया था, तो अगर वो 25 लाख उनको मिला है तो हमको भी 25 लाख मिलना चाहिए। बाकी फिर आप जो ठीक समझो हमें, अगर आप 25 लाख दिलवा सकते हो, नहीं तो हम कोर्ट में जाएंगे। I'm just going to stop you for a bit and make a small observation. There are two lines of questioning happening here. One is on why the compensation and how the compensation is calculated. And the second is what is going to cost you to run the case. They're two different things. Complete one and then go to the next. When you're jumping between the two, you're not getting the whole picture, and she's also getting confused. So if you want to do a reality check with her, you've done a very beautiful questioning. Okay. But you are questioning on two aspects. So in your mind, be clear where you are reaching. You are trying to ask her how much it's going to cost her to run the case and whether she can sustain it. For example, you asked the lawyer how long it took. Very beautiful question. You know, that's the thing that you have to say, okay, you should have asked the lawyer or her again, what is going to be the cost? If she says it's the NGO that's going to pay, that's not in their fact sheet. So there's something wrong there. The NGO has only told her this is a possibility. They have not said who's going to pay. So there's going to be a cost. Obviously, the lawyer sitting here is being paid. So that part, then it makes sense to her ki not only am I adding time and pressure in terms of my time, I'm also
adding cost. For a very future, maybe 10 years, 15 years goal of 25 lakhs, which is, then you have to challenge whether that 25 lakhs is actually, the facts are the same or not. Okay, with that, you get my point. In Okay. terms of, don't confuse the two. Okay. It put slightly different points, but what is happening is you're not getting a picture. And the client is not getting a picture. Thanks. विशाली जी, सॉरी, फातिमा जी, ये जो यादव जी से बात हुई अभी आपके सामने, जो 25 लाख का जो केस वो आपको भी बता रहे थे कि आपको भी मिलेगा, वो 10 साल के लिए चला। ये 10 साल के बाद वो जो लेडी थी उसको 25 लाख मिले। ये आपको मालूम था इस बारे में कि 10 साल 15 साल लग सकते ये तो हैं? पता नहीं था मुझे तो बताया गया 2-4 साल में मिल जाएगा, तो हम तो यही समझ रहे हैं 2-4 साल में मिल जाएगा, उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। ये तो पता नहीं था हमें इतना 10-15 साल मिलेंगे, 10-15 साल लगेंगे, उसमें तो मेरा बड़ा वाला तो कमाने लायक हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और कोर्ट में जाने के पहले कोर्ट फी देना पड़ता है, उसके बारे में आपने कुछ सोचा है? ये हमें कुछ बताया नहीं, ये तो बस वो प्राची मैडम ने बोला था ये केस डाल दो, ये ऐसा कर लो, वैसा कर लो, हमें इसके बारे में कुछ किसी ने बताया नहीं। ये अभी प्राची मैडम से ही बात करनी पड़ेगी, वो हमारे साथ पहले से हमें ही जो बता रही है हम वैसे ही कर रहे हैं। In this now, is it possible to get that figure? जी, आप हमारे क्लाइंट को हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हैं क्या? नहीं, यादव बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यादव जी, आप हमारे साथ हैं, आप यहाँ आए हैं, हमें भी पता करना है, हमें भी जानना है कि आपके क्लाइंट के प्रॉब्लम को कैसे सुलझाए। ये प्रॉब्लम के साथ हमारी फी और हमें कौन क्या देने वाला है, ये सब बातें कहाँ से आ गई? क्या रिश्ता है इन सब से? हम तो सीधी बात कर रहे हैं, हमको पैसा चाहिए। यादव जी, आपका जो रही है बात डॉक्टर साहिबा। यादव जी, हमें यही पूछना है आपके क्लाइंट को, या तो यही समझना है कि उनको क्या क्या मालूम है, उसके हिसाब से हमें भी ये केस सुलझाना है, आपका प्रॉब्लम सुलझाना है, उनको पैसे दिलवाना है, उनका जो प्रॉब्लम है उसको मिटाना है। लेकिन आप अगर हम पे विश्वास नहीं करेंगे तो हम कैसे जाएंगे? उनको हमारा आप तो पे पूरा विश्वास है। विश्वास है, हमें आप पे पूरा विश्वास है, आप भी हम पे विश्वास रखिए। हमें आपके क्लाइंट से पूछने तो दीजिए कि उनको क्या क्या मालूम है। ठीक है, पूछिए। थैंक यू। सुनी, वांट टू आस्क समथिंग? हमने वो डॉक्टर शिखा के साथ भी बात की है, और वो should we talk about what he wants to do? Company of this conversation. Sonu, now to go to what options, you have to ask her. एक तो चलो आपने 25 लाख का क्लेम किया, हाँ, but what will work for you? कितना अगर आपको मिल जाए, आपको लगता है कि आपके प्रेजेंट नीड्स हैं वो मीट की जा सकती है? She doesn't seem You to see, know that 25 लाख मैं मांग रहा हूँ, she has no idea why 25 lakhs, whether will I get it, what is the basis, that's all right. But now come to it कि जी what is it that will meet your needs? कितना चाहिए आपको आज की तारीख में? आज अगर आप मान लीजिए आपके 2 बच्चों की परवरिश आप खुद कर रहे थे, एक और बच्चे की अगर परवरिश करनी है, कितना चाहिए आपको पर मंथ? See, then she will shift from 25 lakhs. What will meet your needs? Sir, I've been asking that. We have been concentrating on 25 lakh only. No, sir. Is there any other figure? She's clueless about any Right. monetary method. So इसलिए अब Any आप monetary. उनसे, see when you ask her what will meet your needs, अगर तो आप एक बच्चे की ना दो की तो आप कर रही है ना, आप कितना कमा रही हैं, 2 बच्चों की परवरिश उससे हो रही है, अब तीसरे बच्चे की परवरिश करनी है, आपको कितना लगता है और खर्चे की जरूरत पड़ेगी? So we asked that, and these are the real need questions, because you see मुझे कितना चाहिए, एक तो है कि मुझे 25 लाख मिलना चाहिए, that is a desire, but what are my needs? Desire can be a 1 crore, but my needs can be only few lakhs or maybe few thousands. But Then at this point, there will be a shift. Then you can then take them towards what if Dr. Shikha is willing to help you with this kind of a figure. Do you think it will work for you? But first, get to her needs. What are her needs?
बेसिकली आई क्वेश्चन दैट आई वुड प्रोबेबली आस्क इज हम आप दोनों मिलके कितना कमा लेते हो और उसमें आपका खर्चा अच्छे से चलता है क्या? दैट इज द क्वेश्चन दैट आई वुड प्रोबेबली पुट 45 और द मीडिएटर. Deepa, exactly what I'm just trying to say. I'm putting it in a different words, saying that what are your needs, how do you meet, how much do you earn, only for this reason, so that she realizes the figures that will work for her are not in lakhs. But if these figures are met, do you think ultimately would you be willing to settle if these figures are met for the third child? Then she will do some reality thinking. अदरवाइज 25 लाख का तो एक फिगर दिमाग में डाल दिया, उनको कोई आइडिया नहीं कि 25 लाख क्यों मिलना चाहिए. बट व्हाट आर हर रियल नीड्स, हम उस तरफ भी तो चले ना. गो अहेड. तो फातिमा जी, आप और आपके हस्बैंड है वो दोनों कमाते हैं, वो ड्राइवर है, हाँ. तो आपकी दोनों की जो सैलरी आती है उनमें आपका अभी तक 2 बच्चे का आप ख्याल करते थे इतने में, तो कुछ अंदाजा है आपके पास के कितना दोनों का मिलके सैलरी कितना है? देखिए, मेरा तो 8-10 हजार महीने का आ जाता है, कभी कभार काम कम होगा ज्यादा होगा उसके हिसाब से. अभी तो फिलहाल तो मैं काम पे नहीं जा रही हूँ, 2-3 हाँ. बच्चे को संभालने के लिए. हाँ, और उनका? बच्चा छोटा है. और उनका कुछ आता है, 15-20 हजार तक आता है. कभी ज्यादा काम कर लिए तो 20 हजार तक आ जाता है, नहीं तो 15 हजार तक आ जाता है. सो अंदाज से 25 हजार अगर पकड़े तो उतने में आपका और आपके दोनों बच्चे की परवरिश होती थी? हाँ जी, अभी तक तो चल रहा था, मतलब चल हम रहा चला था. रहे थे कैसे कैसे करके, ठीक है. बिता रहे थे दिन. अच्छा, ठीक है. तो अभी तो ये तीसरा आ गया है, तो अभी हमें पैसे नहीं पूरे पड़ रहे हैं. हम्म. कभी कभी महीने के आखिरी में बहुत दिक्कत होती है. कभी डॉक्टर के पास जाना हुआ, क्या हुआ, तो पैसे नहीं होते हैं. हम्म. तो डॉक्टर शिखा के साथ भी हमने बात की थी, और अगर वो आपकी बच्चों की परवरिश या उनका एजुकेशन वो सब में अगर वो आपकी मदद करे तो आपका भी थोड़ा बोझ हल्का हो जाएगा. कैसी मदद करेंगे, क्या करेंगे? अभी मैं मतलब कैसे टाइप का मदद करेंगे? वो डिटेल में हम उनके साथ बात करेंगे, लेकिन अगर ऐसा कुछ हम दोनों मिलके डिसाइड करें कि एक, और वो बोल रहे थे कि कोई एक दूसरा बीएमसी का भी एक पॉलिसी है जिसमें से भी वो आपको पैसा लाके दे सकते हैं, और बच्चों की वो परवरिश में भी आपकी मदद कर सकते हैं, तो क्या वो ज्यादा ठीक नहीं रहेगा? आप कोर्ट कचहरी की बात कर रहे हैं जो सालों तक, 10 साल 15 साल तक, किसको पता है उसके एंड में भी आपको पैसा मिले ना मिले, तब तक आप ही पता है कि बच्चा तो आपका बड़ा हो जाएगा और खुद कमाने लगेगा. तो वो सब में पढ़ने के बावजूद अगर आप ये उनकी थोड़ी सी मदद ले लें अभी, जिससे आपका कंटिन्यू रहे जो अभी है वो. आप बताइए हमें. देखिए, हमें तो अभी आज की तारीख में दिक्कत ये है कि हमें पैसा पूरा नहीं पड़ रहा है. अगर हमारा हाँ. जैसे था वैसे ठीक से चलेगा तो हम तो हम्म. खुश है. हमें बच्चों का अगर कोई ये करेंगे, क्या करेंगे हमें पता चले तो हम बताएंगे हाँ, हमें क्या चाहिए. तो वो फातिमा जी, एक्स हाँ, सो नहीं बेसिकली कि देखिए, अगर ये जो बीएमसी का पॉलिसी वगैरह आप जो हमें बता रही है ना, उसमें 25 हजार या 50 हजार से ऊपर कोई अमाउंट है नहीं. मेरे हिसाब से तो 25 हजार ही है. कहाँ हाँ. 25 लाख और कहाँ 25 हजार? क्या 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 हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये पॉलिसी हमें भी मालूम है, ये हम्म. कॉम्पनसेशन सरकार की तरफ से मिलेगा, लेकिन वो सरकारी हॉस्पिटल में अगर हमने किया है ऑपरेशन तो मिलेगा, तो प्राइवेट है ना. लॉयर और गायनेक टॉकिंग. बहुत ओके. ओके. फातिमा जी, क्या अगर हम ये आपकी बात अभी जो हुई है उससे बराबर समझ गए, तो आप ऑप्शन देखने के लिए तो तैयार हैं?
हम आप लोग बताइए, हम वकील, हमारे वकील साहब से बात करेंगे। हमारे वकील बिल्कुल साहब जो बिल्कुल ठीक लगते हैं हमें बताते हैं तो हम कर लेंगे। हम बिल्कुल, लेकिन ये जो कोर्ट का प्रोसेस है वो जरा प्लीज इनसे एक बार आप आराम से बात भी कर लीजिए, तो आपको और आइडिया आ जाएगा कि वो प्रोसीजर एक्चुअली कैसे रहता है, कितना टाइम लगता है, क्या फी लगती है, वो उसमें आपकी डेली जिंदगी में कितना फर्क पड़ने वाला है, वो सब जरा प्लीज उनसे आप वापस एक बार बात कर लीजिए, तो आपको उसका भी अंदाजा आ जाएगा। और हम बहुत खुश हैं कि आप ऑप्शंस के लिए तैयार हैं, और हम अभी प्राइवेट सेशन ले लेते हैं डॉक्टर शिखा के साथ, और वो क्या आपकी मदद कर सकते हैं कि आपका ये जो बच्चों की परवरिश आपको करनी है वो कितनी आसानी से और जल्दी से हो, वो आपको समझा देंगे। थैंक यू। So let's try and bring them together and close it so that we admit the others also. ओके, We get a little time for the One more thing. yes. Did we take permission from Dr. Shikha Yes. about the policy part? See, anything that is told to you in a private session is confidential. We had not taken permission from her to disclose this to the other side. We did. So sometimes, these can become very, very touchy things. So every time you break a private session, ask the party, is there something that you told me should be kept confidential? Because instead of saying what I can, disclose, everything else is to be disclosed unless you tell me something which is to be kept confidential. So that's the better question to put to the party, but you must ask after a private session. And second, when Dr. Deepa said, about that policy, it only generates 25,000, etc. Ask her, how can we make this better? Is there a way that we can improve upon this? Always, the unlayering. Don't take any statement on face value. How can we improve this? Can you help me or help us understand? Therefore, it is important that, if she says, I have actually applied my mind to my needs, how my needs will be met, please go back. That's where you now break, tell them to prepare themselves and come back after discussing with the family, with the lawyer, as to how much needs, what are your needs, and if those needs are met, would you be willing to consider that? Always take it further. Don't stop at that. Don't stop at anything that is given to you on face value. Start questioning why. Why is that important? Is there any way we can improve upon it? These are questions, there are some standard questions which should be in your mind all the time. That's the only way to shift parties, because any statement made is a position. Take it, any statement made by the party is a position. Till you can see the underlying interest. And that can only happen if you put the next question. Why? What is important in this for you? How can we make this better? 25,000 तो बहुत कम है. Let me understand. तो 25 नहीं 50 होने चाहिए, 50 नहीं 1 होना चाहिए. How can we make it better? Let them evaluate and tell you. This thinking has not gone in. Don't stop at a statement given to you. Always try and probe deeper and deeper into it. That's why I'm saying curiosity. Help me understand. That's the kind of thing that should always go in your mind. Why not 25? Why will those not work for you? Help us understand. Therefore, your needs. How will your needs be met? What are your needs? If they say we have not thought about it, tell them, okay, we'll break for today, come back. Think about it, work on it and come back. Because we are not reaching anywhere now. Till the party realizes what her needs are and where her needs will be met. 25 lakh is compensation. Paisa chahiye for parvarish. How much do I need? Can we talk about that? Then the need assessment must happen. And if they can't do need assessment, then go back, work on it, come back, prepare yourself, come back. We'll meet again. Preeti, this is a role play.
But we are not looking for a solution immediately. There are times, you'll be meeting 30 days. Okay, let's meet tomorrow. Let's meet after, if you're working from morning till evening, okay, we'll meet after lunch break. Go think about it, talk to each other and come back. Give them that time. That's one of the techniques how we break impasse. Defer for the time being, whether for hours like a lunch break or a tea break or next day. Call them back next day. Give them that homework. Kanda? Yes, so basically, JP's given a very elaborate feedback. I think this was literally the first time we were practicing these the tools, so it's gone very well. I request you to all watch the recording, and you'll then know where and how it was going, because when you're doing it, you don't see the whole picture. But if you're able to watch the recording, you can see, okay, this I could say this differently, I could do this differently. So this is a very good opportunity to watch it and see. The questioning was good. It's just that one thing that I'll remind you of is have issues and agendas. So in your mind, have a structure of questioning. And point by point. So in the beginning, you're only collecting information. Now in the last half an hour, what you were doing is actually trying to focus on issue by issue and move towards creating an understanding between the parties. But for that, if you don't have an agenda or if you don't have specific issues that are defined, you will find it difficult because you will jump through, because eventually you're looking at how I can put the pieces together. That's what's going to lead to an impasse. You don't put the pieces together first. You go issue by issue, and then you figure out what is it about that issue. So like we kept telling you that explore her expenses, her status right now. That is one separate issue. The legal aspects of whether she's going to win the case, not win the case, that's a separate issue. If you separate the issues and go step by step, the communication is easier. The collection of material information is easier, and the party sees it because you are exploring only one thing. Moment you jump from here to there, you are also looking for a solution in your head, and party is also confused. So I don't think the message went across. Yes, after a little while it did. अच्छा 10 साल लगेंगे, बहुत खर्चा होगा, बहुत difficult होगा. So that went on later. But in the beginning, there was little. So how you do it in your head is you have a structure. So if you watch the video again, you will get that, that structure that, okay, I could have done this. Follow the narrative of the speaker. And when it's time for you to go to the next stage, have a structure in your own head. So that's something that I would give as a feedback. But I think very good for all the questions. First attempt, yeah. Yes, the questioning. But I just have one question. It's very difficult to mediate in this case when you know that the doctor is not wrong. I mean, we know statistically that this is a possibility that 1 in 100 or whatever can get pregnant. That's a complication. So it's very difficult to mediate, because we know that the doctor is not wrong. Yes, in every case, there will be something where either the doctor will be completely wrong or not wrong. So there will be things like that. Yet, one needs to look at it from a perspective of what can we still work on. But then why should he pay for it, if he's not wrong? That's what So I'm trying remember to... one thing, the statement there, okay, you're the mediator, right? Yeah, I know. So it's difficult being a mediator, Ganda, she's exactly doing what Fatima was expecting her to do. Yes. I know. I because did not you're do the it. I'm just mediator asking. and you have not got all the facts from the doctor. Okay.
why the doctor And is at the that table. was the feeling. So as a party, that is the feeling that I got during the first session, that oh, she's just trying to convince me that doctor is not at fault. There comes the point of neutrality. There comes the point of neutrality where we are supposed to have a third person's perspective to things, and here we need to be like that even if it happens and doctor is willing to talk to you, so you should take advantage of it. That is what I would sell it as. Yeah. The doctor should take a doctor is trying to talk to you. Doctor is talking in terms of compensation, is willing to give you something. May not be exactly what you want, but is definitely willing to talk. So there is a chance that you might get something, because if the doctor goes to the court and if the doctor has all the documents in place, probably the chances of winning this case again become 50-50, because it is like a gamble. I mean, what I would probably tell all these people is, what I would tell Fatima is that this is a gamble that you are playing, and with God's grace, if you are successful, very good. If you are not, then you have not only wasted the time, you have also wasted this opportunity, and probably this is the best opportunity that you have to at least secure your children's future. I mean, we cannot do anything about what you went through, but we can definitely do something for your child. And then I would probably harp on the child only, and his or her education, and how you can give them a bright future. Probably I wouldn't get into how much she spends in the month. I would probably tell her कि देखो तुम्हारा इतना इतना खर्चा तो बच्चे के पीछे होता ही होगा, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी समझते हैं. Probably I would go with that line. Okay, I she want had to add one thing before that. Dr. Sirur, did you feel that you were given enough opportunity to say your side of the story? I think I was saying everything that was needed to be said. It was not being elicited. No offense meant, but I incorporated all the points, and maybe no further probing was done. Like, But there was yeah, some confidential information that yeah, needed to yeah. be said, which I don't think came out. It as didn't yet. come out The because fallopian tubes were not maybe there sent was for. Yes. a thinking from the mediator side, which I believe will happen till such time all of us get tuned to this system. Absolutely. Okay, everything is right on the part of the doctor. Yes. So, and maybe there's nothing wrong. So what is there to ask? So in the private sector, there was one confidential issue, that was the excised portion of the fallopian tube was not sent for histopath, and that was required to be sent. But I possibly would have adopted a method where I don't have to send the excised method. There's, I believe, modified Pomeroy's, the gynecologist here would say, you just ligate it. You don't have to even excise it. Is that right, Dr. Deepa? No, even we will find something that it is not a compulsion to send the Yeah. tubes for histopath. Probably So, it We'll depends find a if precedent we to that. want to So send it. I It's saw very that point. technical. I saw that point from a I very, yeah. yeah, But I so wanted them to ask me, are you sure that nothing actually went Hmm. wrong in this? Because yes, exactly. Hmm. even in a failed sterilization, if you see the Supreme Court judgment and the books, textbook references, they do mention that there can be negligence which can cause failure of sterilization. So possibly the doctors could have asked me this question, ki, have you taken that duty of care, or did something go wrong also in this? Could have been elicited. Correct. So one of the things the mediators need to be aware of is, do I know everything, or have I jumped? Because there is one barrier that we haven't talked enough about, and that's the hypnotic nature of numbers. Once you see a number in a that's thrown at you, either in a mediation or it's I think someone's this thing is on. Once that number is thrown at you, you tend to focus on the number and you don't see the other facts. And I think somewhere there was an assumption doctor is innocent. It's put it out there that this kind of procedures can fail. There's nothing else that we have to worry about. Now we just have to focus on the number. So there was a small thing that could have been explored a little bit, and then that would have given you all a thing that doctor is also willing to negotiate. For some reason, he's at the table.
Also, even if you're not at fault, many times reputation is such a thing that you don't want this matter to be discussed in court at all. I don't want to take that risk. So but then I don't think that came out because those questions were not asked to the doctor. So that's a learning. That Like I would have possibly asked, it is also possible, that you may lose the case despite this, because yes. at the lower courts, sometimes the judgments can go against you, even if there are a lot of issues in your facts in your favor. And then as you go higher, then maybe you win the case. Maybe, National Commission decides something, then Supreme Court reverses. That has happened in many of these cases. Secondly, Dr. Balsara, what I would think is, if I am the mediator, I feel that the doctor is right. The very fact that I said that I want peace of mind, I know that I have not done anything wrong. So I would relate to that concept that they have come before the mediation only because they wanted that peace of mind. Both sides, we know that one of the sides is wrong in asking, or the other side is wrong in not giving what is demanded. But even if we know that, we are here to have a settlement, and that settlement is not based on solely on the facts. That will influence us to probably go towards a settlement, but that cannot be the sole grounds, because otherwise then we would have gone to court and then said, this is the legal position, this is a medical position, let the courts decide. But I said that I know the legal facts. I know the legal standing. I have a legal backing. I have the insurance policy. So I don't have to spend anything except my peace of mind. And all of us as doctors would want to retain our peace of mind, focus on our practice. I hope my thoughts are right. Everybody is looking Yeah. very... You are That actually hint- echoing what hint- we think. That's why that hint need to be taken. That's why sometimes, when statements are coming from parties, these are what we call turning points. You have to keep your ears and, that's why listening becomes so important. And when I kept telling you, take notes. Short notes, because if you had noted these points, when you summarize, it makes it easier for you to summarize, and then your focus goes there. Oh, the real interest of the doctor is he wants a quick closure. The party needs to be met. And therefore, the focus, as Ganda said, the focus must shift. No questioning or negligence, whether 25 lakhs is payable. Those are Vatna questions is when parties get stuck on impasse. They don't move. Nahi, mujhe 25 chahiye, 25 chahiye, 25 chahiye. Then you have to tell them. Do you think you'll get it? How many cases has the Supreme Court? There's one judgment we are referring to. Are there any judgments of the Supreme Court where the doctor has been really negligent in similar facts? All that the lawyer ke saath you can do Vatna. It's just to shift people. But Vatna, etc. is not to be examined. Main is options. First you find out the underlying interests and then start working on options. How those interests will be met. These are the two areas where you need to actually be strong at. And that's where your questioning skills, what Ganda said, focus. Not jump from one topic to the other. Unless you have, they say, Ganda has been talking about issues and agendas. We even talk of sub-agendas, sub-issues. Break them up. Focus, 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 focus till you reach the layer, underlying core. Till you reach the core. Then only you will work out. And as very well put, Dr. Subodh, this is not about who's right, who's wrong. This is not about deciding compensation. This is about finding a route to settlement. That's it. Ganda. Yes, that's it. And that's what, if you remember, one of the questions which I said about, therefore, reputation sometimes becomes a very important deterring factor to go to court or to get into a litigation mode. What will your rivals think? Do your other customers know that you're in court? Remember that Bhatna question, how to put those reality testing questions I told you?
How will they feel about it? I mean, this doctor is in court, therefore something wrong. So, but in this case, the doctor never wanted to go to court. Is that Exactly. lady who went to her? So there's no point asking her that question. No. I'm saying when Ganda said about doctors, when Dr. Subodh was very clear, he gave you all the hints. Quick closure, I have a support. The court Yeah. doesn't deter me here. But yes, I would not like to be in court still. Yeah. That's where you need to work on that part. That's the turning point. This is his need. His need is not that I can't fight this litigation. Sometimes his interest is not that, he's scared of fighting the litigation, but his interest is not going to court. In spite of, I may have a good case, I may have a battery of lawyers supporting me. That's all right. I may have the insurance company at my back. But I still don't want to go to court. So that's his Vatna. Don't want to go to court. So therefore, if you had started, this 30,000, 25,000 figures, if those needs had been crystallized, Fatima's needs, maybe then Dr. Saab comes in and says, okay, I'll contribute 10 more. If that 10 was a deficit, he may say, okay, fine, I'll contribute 10,000 more. See, these are various ways, then that deterrent from going to court, doctor will shift. Not paying anything to, well, I'll also chip in, if it is reasonable. Want to finish it. But How do first, you- we have to reach the needs, real needs. Because as Ganda really said, that 25 lakhs stuck. And then there was no movement. What was one of the solutions? Sorry, bit curious to know. No, you see, now what is the problem? The real need is the third child has come, not that third child is unwanted in the sense of God has given her, Fatima Right. is religious, so that's fine. Question is, how do I maintain this child? I need some money for her maintenance. So there are two children that they are maintaining with their whatever salary that they have. Now they need another child to be maintained. What is it that we need? Food, clothing, shelter, there's no problem. They will stay in the same place. And schooling, fees, etc. as they go along. What is that need? Somewhere that person has to come and tell you that this is my need. Can we look at it? Can we work on around this? How much in this particular, see, because then there will be some real figures on the table. 25 lakhs is a notional figure. Damages damages court can grant you 1 rupee also. And the damages can be 1 crore also. There's no standard formula. I mean, that fact that, in that judgment which we are talking about, which in this particular case, 7 children that lady had, she was a laborer. And then the court said that government should also contribute. Tantra Everything was versus. not put on the doctor. But in that case, actually, it was not even because of failure of sterilization. The certificate that was issued mentioned that both the sites have been ligated. In fact, only one site was ligated, but the There you certificate are. was. There you are. The so- facts so- are totally different. That's what Yeah. I'm saying. In fact, Shivram versus State of Punjab, which came later on, in fact, said that the facts of that earlier case were different. So we have not given on that basis. We have given only because the certificate was wrong and she was under false assurance that, she is now all right. She won't get pregnant. So Then- this was what I was expecting. Was there a mistake on your part, or many times, there are additions inside and we are not able to ligate it properly. So then you do a somewhat kind of thing and then just leave it. Then there is a chance that pregnancy may still happen. So was I wrong in doing that procedure is what could have been asked. in private. Probably here, I would probably say that if this was the case, as Dr. Stirur is telling us, if that was the case, then probably ideally this patient should have been counseled.
that look, we've been able to ligate only one tube, the other tube has not been ligated, or we've not done the standard procedure that was expected of us. We've done something which was a modification. And in this case, it is either you use something else to prevent the pregnancy in addition to what we have done, or we will do an X-ray after 3 months and see whether our procedure is successful or no. See, what we do as gynecologists is we have got this format on the TL form that comes from the government. See, we have a standardized format that comes, and that particular paper is given to all the patients. And patient is generally advised to undergo a HSG, that is called as an X-ray, where you look for the tubes to be blocked. So if the patient has not done that HSG, then we don't certify that the procedure is successful. What we can write is we have ligated the tubes, but we cannot give that the patient is sterilized. So there are two different aspects that will have to be that are generally put in this. And this HSG, whether it was done or it was not done, that is a technical question that will come up. Of course, that comes up when actually things get too hot to handle, and when they are really in the court and we want to actually prove the doctor to be either guilty or not guilty, and shift the blame onto the patient as well, as it is contributory negligence, even the patient has been careless. And then stick to the fact that there is something called as naturally the tubes tend to open up by themselves. This is probably the defense that can be taken, but then that is a very technical thing that comes much later when that fight really picks up and really gets technical, but it will probably not come here. Dr. Deepa, have you also done LLB? Yeah. Yes. Just shows that you know, I mean, I didn't even have to think about it. The way you presented the whole thing, it is so. You were so succinct in making an argument. And problem with Sonu was she was assuming in her mind that he is innocent. So these questions did not arise in her mind at all. Yeah. So no, I am innocent. Dr. Subodh has already created that the impression on everyone from the day one in the training. Dr. Preeti has a question. Yes, Preeti. How do you separate the victim here, Fatima, from her overzealous lawyer? How do you do that? You're trying to bump me off. No, because you seem to be the biggest badha in her getting her money Wow. out. Yeah, Advocate Yadav, we don't like you. But we can have a session without the lawyer also, na? I didn't eat my pan and I did not. The best way is first have a session with the lawyer. Then say, can we now go to your client? Instead of first going to the client, then keeping the lawyer out, tell the lawyer, we'd like to first have a session with you. And after you have had a good session with her, tell her, look, any problem? Can we now just have a session with the client? Instead of saying first with the client, because then the lawyer will resist. Have a session with the lawyer first. Yeah. So I'd like We can ask him to step out. We can ask the lawyer to step out. Okay, so that has to be done technically, Dr. Sonu. I'll just add to what JP said. So the kind of questions you ask the lawyer is, first of all, about the case itself. That there is this court that this case has been, there's this case, there's this precedent and all that. You explore that. What were the facts? Is it an apple-to-apple comparison? What happened in that case? Because that's really important. And the lawyer knows it. Second thing, can your client really afford it? To take the whole thing through it. And have you been able to tell her what are the difficulties of, taking the matter? Once you've done all that, then you ask the lawyer's permission, may I have a private session with your client? So there are two aspects here. One thing is you're not asking these questions in front of the client and embarrassing the lawyer. So you're kind of keeping that, because if you ask these questions, like for some of the questions that came up was, what are the lawyer's fees and things like that, then the lawyer started getting defensive. That's because you're asking the questions in front of the client. So there is there's a reputation that the lawyer also has to hold on to. So you don't embarrass the lawyer in front of the client. You have a separate session, have the session with the lawyer first.
and then have a session with the client. So that way you're taking care of everything. You've also got the information from the lawyer and build that rapport with the lawyer that I'm protecting you. I'm not going to expose you in front of your client, but also let's look at her, her side of the thing also. Let's look at her benefits and her. You know, who's the third party here who can bring about a settlement? This Yadav. No. The Fatima's husband. Ah. Get him in. ये litigation है, कब तक चलेगी? You see, I was Fatima has wondering been why he's not brainwashed. there. Get the husband Huh? in. I was wondering all the while why he's not here. You know, No, he's usually, a driver. He has a job to do. no, that's what I'm saying. So therefore, our question is, you have to then do everything that you're doing with Fatima with the husband. The husband will prey upon a wife and say, look, if you're getting this, what is your problem? Why are we fighting? Would he come? Request? Why not? Husband, wife usually I'm sure the husband would like to stand with the wife. Unless he's also litigious. We don't know. I'm saying this is one way you could have tried. There are so many things that, all these things will keep coming to you when you, who are the people on the other side? Whom I can use? That sometimes we ask parties. Do you need somebody here? Just to get a hint, or they will blurt out that, my husband also has been he's been creating a problem. I'm not going for work. I'm not able to concentrate on the children. So, there is somebody else whom you can work on. All these things basically, but question is that all will come to you by experience. Question is, how do we do the questioning skills? Most important is the questioning skills. One, you have to have a format, the kind of questions that we talk to you about. And secondly, how do you fit them in those fact situations? How do you mold it? How do you put it across? It should not look like a threatening question or a cross-examination. That you must be very clear. You can't do that. Yes. Kirti ji. Yeah, I just wanted to know, Ganda told us just now that you asked the lawyer permission if I can have a private session with the client. What if he doesn't agree? No, I have to be present every time. Then is it the lawyer's prerogative and you accept that? You cannot force. You see, parties they trust their lawyers. If there's, we started with saying that Ganda also said 95% cases get resolved because of lawyers. 5% cases don't get resolved is because of lawyers. If he doesn't want a solution or he wants the litigation to go on, he'll not permit this. Yes, you're right. Sometimes, therefore, you have to try your best. You are the master of the process. You have to use all your skills. But if it doesn't work. Maybe 6 months down the line, 1 year down the line, party will realize that the lawyer has taken them for a royal ride. They will change the lawyer or they'll come back. We have had cases where these mediations have been referred back to us twice, thrice. By sensitive judges thinking that, maybe that was not the right time, send them back again. They've come back. And the parties have come and said, I wish I had taken that offer which was given to me then. It happens. You'll have difficult lawyers also. Yes, Dr. Subodh. I think Roshali raised her hand first. I don't want to offend you. Okay. Sorry. Vishali, yes. No worries. Thank you, Dr. Subodh. So, Jimmy, my question is here, the role that I played was of a person who's not really knowing what is doing, is someone who's been, as you rightly said, brainwashed to get into this. So I'm sure there would be cases like this, particularly when the illiterate people come. They don't know what they're doing. Somebody has just put them in, okay, आपको ऐसे करना है, ये करना है, आप कुछ भी कुछ. So they will not have their own stand.
And in such cases, the lawyer typically will be the person who will be the driving factor. Would it be wise to focus our discussions with the lawyers in such cases? We have seen, Vishali, where lawyer is actually a person who supports the mediation process and wants a solution or is a problem-solving lawyer. He will say, sir, let me get back to my client, sit with him, because the party will open up with the lawyer. There are times when we've done all this and the party has not been able to we have not been able to empower the parties so that they can take their own decisions. Lawyers tell us, sir, let me sit down and work with my client and I'll come back to you. Unless it's a difficult lawyer. If it's a difficult lawyer, it's different. But if a lawyer really wants the solution, they help us. They will go back, sit with the client, whatever questions we've asked, because now the lawyer has understood where we are getting at. So he will sit with the client and get this information. And next time when he comes, he'll tell us, sir, if this is our bottom line. If she gets this, probably we'll be able to settle this. He'll give you figures if the party is not able to give that. It happens. But question is the lawyer problem solving kind, or is the lawyer not wanting a solution? If the lawyer not wanting a solution, that I told you, those 5%, we can't do anything. Because parties anyway can't be empowered. Lawyer is not permitting it to be empowered. Third party help is not coming in. So what do you do? It's how to build the self-determination happen. Because mediation is about self-determination. Yes, Dr. Swar. I would have possibly asked this question. I would just want to know whether that would be a right question. Help me understand. You took a decision to go ahead with the pregnancy, though there was a choice not to go for abortion. Help me understand what made you take that decision? Because She told Dr. Subodh, she said that. Dr. Subodh, she says it is religion. But there could be other reasons also. I mean, they would have, even if it's religious, they would have planned it कि अभी तीसरा बच्चा आएगा तो उसका खर्चा होगा. तो I want to get it out of them कि वो खर्चा तो डॉक्टर साहब दे देंगे. Is that what was the thinking kind of thing? This is where we wanted to get at those figures. Now that you have a third child, how much do you really need? But she was not even able to give us those figures. I mean, when the mediators made that question, she was not able to even give those figures. Those figures were put to her. But she said, I just can't tell you. My lawyer can tell you. I mean, what you need to spend, you will tell, lawyer will not be able to tell you. Gandha, you want to say something here? Yeah, I just wanted to add, one thing that I noticed is all the questions were very technical, and they were kind of going towards, it was like collecting information, and I know this is the first time that you all are doing this, but when you summarize, you also acknowledge the emotion. And I have noticed that the emotion was not acknowledged at most places, so especially for Fatima, because the way to build a rapport and to gain trust for her to be open with you with these answers is to acknowledge her emotion and to make her feel that you are another human who understands where she is from or who feels her pain. So that little bit of empathy has to be shown through acknowledgement of the emotion of standing with her at that point. And if you watch your video, you will notice that a little bit of work can be done on that angle. That's critical for building rapport. So one of the reasons that you are not able, of course, this is a role play and we don't know, how the participants are viewing it in terms of the players. But in a real life situation, in a thing like this, the first thing that happens is language that you help connect. Second thing is acknowledging somebody's pain and problem. And that is why when she kept saying, y'all are doctors, y'all will be siding, it was not just neutrality. It's the fact that there's so much difference
economically between her and you, do you really understand where she's coming from? So any statement that would bridge that gap would help. Yes, Dr. Sonu. So at one point in time, the doctor said that he is looking after the education of the first two kids. But when we asked her, she completely refuted that. So then, should we react to it? I mean, she said, no, he's not doing anything of the sort. But he said he's doing it. Oh, I made that up. That was Yeah. not part of the confidential information because I wanted to arrive at a solution. So I thought, and quite frankly, I am doing this in my practice. So No, but I then got that. whom should we believe? Whom should we believe then if something like this is... I You know, am Mediation, sure. Sonu, mediation is Sorry? not about rights and wrongs. No, but she completely refuted it. That's all right. People will take stands for different reasons. People, you see, Correct. that's what I'm saying. If I am standing on the left, it is 6 for me. If I'm standing on the right, it's 9 for me. From where you stand in life, maybe in that position, I would not, you see, since I'm fighting the doctor, why would I acknowledge that, he's helping me? She's not lying because she wants to lie. Today she's considering herself as an adversary when she wants 25 lakhs from him. So she will not accept readily. Maybe as Ganda said, once there is trust building, she'll open up maybe later to you. Yes, I did not say the right thing. Actually, he is helping me with this. But should we tell her that that doctor साहब ने तो बताया था कि वो आपके दो बच्चों की... Threatening question, cross examination. don't do You are that. a liar. Face saving कहाँ मिलेगी उसको? She will not get any face saving, na? Instead, I would rather that you ask the doctor in a private session, you mentioned this, is it true? Because she did not, She refuted. she has not confirmed it. Could you like to elaborate? So see that you don't embarrass the parties, don't put them in a corner. That's not going to help. You But don't this want to inquiry, lie Sonu, will and not help, na? This inquiry is not going to help. We don't have to find out truth in every statement made by parties. Therefore, I said, the moment you get lost in content, you will tie yourself up in knots. Sometimes all this content is just for the sake of, they'll keep blabbering, all the things will be said just because they want to take it out of their system. It has no meaning sometimes. So therefore, you have to keep your focus on your issue, on your agenda, and your questioning is, if they waver, that's why, redirecting those questions, get them back on track. And the reason why both of you were focusing on that statement is somewhere in your head, you all were trying to find a solution. Who's right, who's wrong? In your And mind, also, yeah, you're and already judging. who's lying, who's not lying. So try to judge. So both of these are something that we can't do. We need to take our time, keep sorry about those balloons. So we need to take our time, note down the facts, but don't start thinking about them. Only start questioning. With time, you'll get clarity. Then we will look for solutions. See, and most of us, when the whole process started, they said, what is mediation? You ek ko baithao, dusre ko baithao, usse pucho, usse baat karo, and you find a solution. It's tough. It is. Very tough. It is. That's why they call it both art and science. Science because it's like there's a method to it. Art, how you play it. That's in your hands. They say when you start playing a piano, you learn all the chords. But once you start playing, you play by the heart. Right. You don't have to look at the chords. So this will come to you by practice. Yes. Beginning is difficult. As Ganda said, first timer, you people were very good. Very good in questioning, but question was direction. You are not able to bring them, back on the same track where you would like them to go. So you are going all over.
As she said, you know, you had this also in mind, that also in mind. So you're working on the larger picture. You have to come to the nitty-gritties, the points. And then after you clarifying, then move on to the next point. After you get that, move on to the next point. Some focus. You need to focus very clearly on what you want to achieve by your questioning skills. It's difficult, no doubt about it. I mean, it takes time. As lawyers also, like, you know, it takes time. I mean, of course, Dr. Deepa is both lawyer and a doctor. So she can In her fact, even incisive Dr. skills. Subodh, in fact, even Yeah. Dr. Subodh is both a lawyer and a doctor. No, but which is actually, like, you know, if you look at it, for her, she'll be a very, very good mediator. Yes. Because then if you know the legal side also, you have the medical side also. So then you can balance out your, like, you know, your judgment. You need not get into the judgmental mode. And she can But as a empathize doctor, you very are so well. full of the medical part that, you know, you believe in that. So then you know, it's very difficult to shift. Yes, Dr. Subodh, you were saying something. I was saying that she actually enters the character of that whatever role she plays, Yeah, and very she true. does it so she will be a good person to empathize because she knows what that character actually feels or how hurt that person can be. She actually brings that emotion as a patient or a lawyer or whatever. So I'm really amazed by her skills. Really, you know, if I have to play have a play role, I will always engage her. I will be ready to pay her to be part of that play role. I'm not joking. I'm really serious Yeah. about this. Now this is getting embarrassing. I'm sorry for everything. I don't know. I think we Yeah, should have thank had you a all. private session for this I'm sorry. without you. Thank No, you so I much. mean it. There's a lot to learn from you. Lot to learn from you. Didn't mean to embarrass you, but lot to learn from you. Okay. Thank you so much. Yes. Okay. Thank you. Thank you. you. See you tomorrow. Tomorrow another role play? No, tomorrow we will do the last theory portion of the settlement and what Okay. happens if we reach an impasse. So those two topics we have to cover. And then on Saturday, we will try and do another role play if possible. We'll also have some question answer rounds. So on Saturday, have we fixed Yeah, on the time? 2:30. 2:30. Yes. Good for most of you, except Dr. Deepa said she might have a difficulty. You can't have role play without her. I'll observe. I have an OPD. I'll probably be traveling. I'll be Okay. in my car. Okay. Okay.